Yes, good afternoon. Good afternoon, everyone. Yeah, already like you have texted before. So, yes, today I will be starting with the anatomy or the anatomy of the lower limb. Okay, so before starting with the osteology of the hip bone, beta, first I will be discussing the basics with you, right? I will be discussing the regions of the lower limb, the bones in the lower limb. Okay, no, which bones actually constitute the lower limb, right? Good afternoon, Chenam. Good afternoon, Harsh. Yes. Then I will coming on to the joints of the lower limb. Okay, in very short, I will like just give you a brief introduction, and then I will come to the osteology of the hip bone, and then I will come to the osteology of the hip bone. Yes. But I will be discussing the pelvis part separately. Marastayal Khalil. Okay. So yes, I will be discussing it separately. Akhilesh, good afternoon, beta. Good afternoon. Welcome to the session on the anatomy of the lower limb. Anatomy of the lower limb. So yes, before like okay, without wasting much more time, let us just start with the session. So coming on to the regions of the lower limb, coming on to the regions of the lower limb, beta. Now, beta, this region which you can see over here, the hip region, okay, it is also called as the gluteal region. Okay, this is also called as the gluteal region. Okay, this is also called as the gluteal region. Okay, the buttock region or the hip region. Okay, so there was, yeah, Kiran, good afternoon, beta. It is also called as the gluteal region. Why, beta? Because the muscles over here, they are gluteus maximus, gluteus minimus. So all these muscles, due to the muscles present over here, the region it is classified as the gluteal region. The region it is classified as the gluteal region. Now, beta, okay, like just last year or last year, no, when the there was an actor who exposed his gluteal region. So there was like in the news, it was very much famous. Okay, it was very much famous that NEET PG counseling is delayed, and the whole media is focusing on the gluteal region of Ranveer Singh. So only medicos can understand this. When we are talking about the gluteal region, we are actually talking about the hip part, right? So over that time, no, the NEET PG counseling was delayed. Okay, the counseling for postgraduate admission, and all the news channels were focusing on no Ranveer Singh's new photo shoot. So yes, that was the time. So yes, only medicos can understand that what was the gluteal region, right? So yes, so yes. Now, beta, if we start with the regions of the lower limb, beta, you already know that. Let me just draw it for you guys so that it is like way easy for you people. Okay, way easy for you people. So you already know, beta, that we have something which is called as the hip joint. Okay, we have something which is called as the hip joint. Okay, and yes, I'm just trying to draw this. I'm just trying to draw this. Yeah, remember, beta? Yes, I'm just trying to draw this. Yes. So yes, remember, beta, if we talk, yes, if we talk about this, so you are very well aware, beta, that over here something we will have the hip joint. Okay, I will show you the hip joint also. The hip joint. I'm not focusing on the joint right now. Just remember, over here we have the knee joint. Over here we have the knee joint. Okay, the hip joint is formed by which bone, beta? It is the femur and the acetabulum of the hip bone, right? Then we already know we have the ankle joint over here. We have the ankle joint over here. Ankle joint over here. Right? Ankle joint over here. So remember, beta. Remember, beta. From hip joint to knee joint. Okay. From hip joint to knee joint. This region it is called as the thigh region. Okay. It is called as the thigh region of the lower limb.
right? Or it is also called the femoral region. Why? Because the femur bone is present over here. Why? Because the femur bone is present over here. From knee joint to ankle joint, beta. From knee joint to ankle joint, this is called as the leg. It is called as the leg. And above the ankle joint, beta, the whole part, it is called as the foot. The whole part, it is called as the foot. So remember, beta, we have four regions. We have four regions, okay, in the lower limb. We have the gluteal region, that is the first region, okay, that is around the back side of the hip, like the buttocks. Yeah. The second, it is the thigh region. The second, it is the thigh region, which is present between the hip joint and the knee joint. The third region, beta, it is the leg, okay, the leg between the knee joint and the ankle joint. And above the ankle joint, the fourth part, it is the foot. The fourth part, it is the foot. The fourth part, it is the foot. You already know, beta, the foot basically it consists of three bones. Okay, it consists of three bones. I will be discussing all the bones in detail. So remember, from in order, beta, it is tarsals. Okay, it is tarsals. We have metatarsals, and we have phalanges. We have phalanges. If we compare it with the upper limb, beta, अपर लिम्ब में जो हैंड में जो बोन्स होती हैं, हैंड में above the wrist joint, it is all hand. We have carpals, metacarpals and phalanges. In the foot we have tarsals, metatarsals and phalanges. We will be discussing this in detail, guys. Okay, so we have the gluteal region, okay, around the hip, right, the hip bone, right, the thigh region, okay, the thigh region, and लेग एंड फुट. बेटा इतना क्लियर है सब लोगों को? इतना क्लियर है सब लोगों को? फटाफट से एक थम्स अप दे दो. ओके, फटाफट से एक थम्स अप दे दो if the regions are clear to each and everyone, those who are watching the lecture. Yes, those who are watching the lecture, just give me a thumbs up. Yes, Jainam, Harsh, very good. Kiran, very good. Very good, beta. Perfect, perfect, perfect. Jayashri, David, Ash, very good. Sai Krishna, very good, beta. Very good. Perfect. Perfect, beta. Perfect. Dimple D, very good. Very good, beta. Attend the session and like you will be perfect in the lower limb. If you attend it from like from the basics, everything, like you will be very much perfect. Now coming on to the bones of the lower limb. Okay, coming on to the bones of the lower limb. Okay, now okay, the bones of the lower limb. Garima Noor, very good, beta. The bones of the lower limb, beta. Okay, now beta. Firstly, when I was talking about the hip joint, it is actually this joint, beta, that I'm talking about. It is this joint. This is the hip joint. Okay, hip joint. Now, you already know, beta, we have this bone, beta, this expanded bone that is called as the hip bone. Okay, the hip bone. Now, you already know that for suppose this is the midline of the body, beta. This is the midline of the body. Okay, this is the midline of the body. You are very well aware that this is the midline of the body. Okay, and everything that I will be telling you, it will be in the normal anatomical position. It will be in the normal anatomical position. It will be in the normal anatomical position. Beta, what I'm teaching right now, please concentrate on that, John. Okay, it is in the normal anatomical position. And remember, beta, it is the midline of the body. It is the midline of the body because I have to tell you so many things with respect to this. Okay, so this is the midline. Okay, this is the midline. This is the midline of the body, right? This is the midline of the body, right? Now, beta, you already know the bones of the lower limb, okay? Basically, we have two bones, okay? We have two hip bones, two hip bones, okay? We have two hip bones, you already know. We have the right hip bone and we have the left hip bone. Okay, we have the two hip bones, that is the right hip bone and the left hip bone. Okay, if you can just see beta over here, so this is the hip bone, beta. So this is the right hip bone according to the normal anatomical position, and this is the left hip bone. Okay, so this whole structure, it is the hip bone.
and this bone, it is called as the femur. It is called as the femur. So you can very well see in the picture as well. This is called as the femur, right? So we already know the hip bone. Yeah, the hip bone basically consists of ilium, ilium. We have pubis, and we have ischium, ischium. So hip bone has three parts: ilium, ischium, and pubis. Ilium, ischium, and pubis. Okay, so you can see that we have ilium, ischium, and pubis. We have three hip bones. Okay, so remember, beta, over here, I mean, three, like we have two hip bones basically, and each hip bone is basically constituting of three parts: ilium, ischium, and pubis. Apart from that, beta, if you want to name this bone, now this is femur. I have already told you this is femur, and you already know the femur. It is present in which region? Thigh region. It is present in which region? Thigh region, and it is 1 plus 1. Now when I say 1 plus 1, beta, you are already aware that I'm talking about the right femur and the left femur, the right femur and the left femur. Okay, and remember, beta, it is the longest and strongest bone of human body. It is the longest and strongest bone of human body. Okay, it is the longest and strongest bone of human body. Now, second part, beta, you already know the one which is closer to the midline. Now, in the leg part, beta, we have two bones. In the leg, we have two bones, beta. Okay, before the leg part, can you identify this bone, beta? It is also called as the kneecap. This bone which I am highlighting right now, can anyone tell me which bone is this, beta? Which I am highlighting right now, which is present on the lower end of the femur? Yes, Noor, very good. It is the patella. It is the patella. Very good, Chainam. It is the patella. And remember that patella, it is present on the lower end of the femur. Okay, patella, it is also called as the kneecap. Patella, it is also called as the kneecap. And we have two patellas in our body, right patella and the left patella. Right patella and the left patella. And remember, it is present in the lower part of, yeah, it is present in the lower part of femur, lower part of femur. Yes, and remember, beta, patella, it is not forming the knee joint. Again, beta, knee joint, I will be coming to the point that the knee joint, it is formed by femur and tibia. It is not formed. Actual knee joint, it is not formed by patella. Okay, true knee joint, if we say. So concept should be very, very clear. It is not forming the knee joint. It is not forming the knee joint. It is not forming the knee joint. Yes, everyone is right. It is not forming the knee joint. True knee joint, it is formed only by patella and this bone. Okay, this bone, it is tibia. It is tibia. And this bone, it is fibula. This bone, it is fibula. Now my question to you people is, out of tibia and fibula, which one is medial and which one is the lateral bone of the leg? Out of tibia and fibula, which one is medial and which one is the lateral bone of the leg? Chalo, फटाफट से बताओ. Which one is the medial and which one is the lateral bone of the leg? Garima says tibia is medial. No, tibia is medial. Fibula is lateral. Very good. Amira, very good. Tibia medial. Jainam, fibula lateral. Very good. Dr. H, tibia medial. Rowdy, very good. Very good, बेटा. Usman, very good. बेटा टिबिया लेटरल कैसे हो सकता है उस्मान? देखो बेटा, बॉडी का मिडलाइन देखो. बॉडी का मिडलाइन देखो. बॉडी के मिडलाइन के पास है. टिबिया इज क्लोजर टू द मिडलाइन ऑफ द बॉडी. Tibia, it is closer to the midline of the body. Anything which is closer to the midline of the body, it is said to be medial. It is said to be medial, or in other words, I would say it is inside. Okay, inside. Okay, towards the midline of the body, right? Yes, medial है. Very good, very good. अब fibula जो है, as compared to tibia, it is away from the midline. As compared
to the tibia, it is away from the midline. So fibula, it is the lateral bone of the leg. Okay, I can simply say it is the lateral bone of the leg. Lateral bone of the leg, and tibia, it is the medial bone of the leg. Medial bone of the leg. Now beta, coming on to yeah, over here we have the ankle joint. Okay, we have the ankle joint. I'm not specifically marking it because I will be dealing with the joints in the next slide. Now you are already aware that we have bones in the foot. Okay, bones in the foot, beta, bones in the foot. Now beta, this view, okay, ये कौन सा view है beta? Which view is this? This picture, tell me which view is this? आप ये सारी bones, you are able to see this bones from where? You are watching this bones from where? Okay, from, yeah, it is the anterior view. Very good, Garima. It is the dimple. Very good. Beta, view भी clear होना चाहिए. You are watching the bones from front. You are watching the bones from front. Yes, Noor Jainam. Very good. You are watching the bones from front. So that is the anterior view, beta. That is the anterior view. Yes, very good. Very good, beta. Front. Anterior view. और ये जो bones मैं दिखा रहा हूँ, bones of the foot. Okay. If I simply say the bones of the foot. Now, this is which view? View, beta. Tell me, जल्दी से बताओ, which view is this? View बता दो, view बता दो, ये वाली view बता दो बेटा, इसको नहीं. Which view is this बेटा? फटाफट से बताओ. This view, it is called as the, yes, upper view या superior view बोल सकते. So yes, we have the superior. ऊपर से देख रहे हैं ना? Superior view. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, टेक्निकल टर्म्स भी सीखते जाओ. सुपीरियर व्यू, गरिमा, डिंपल, किरण, जयश्री, वेरी गुड. वी हैव द सुपीरियर व्यू. ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना बेटा, द बोन्स ऑफ द फुट, दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन्स. They are divided into three regions. Okay, we have the tarsal bones. Okay, we have the tarsal bones. We have metatarsals. We have metatarsals, and we have phalanges. We have phalanges. We have phalanges. Now, you already know, beta, A वाली साइड कौन सी होगी? Okay, A and B. You guys are going to tell me A will be medial or lateral, or B, A और B में से out of A and B, which one is medial and which one is lateral? Sides की बात कर रहे हैं. Which one is medial and which one is lateral? बेटा अपना पैर देखो. Just see your own foot, your great toe. ठीक है? It is towards the midline of the body, right? Yes, it is towards the midline of the body. जो आपका अंगूठा है, it is towards the midline of the body, right? So remember beta, A is the medial side, and yes, B, it is the lateral side. B, it is the lateral side. चलो, medial lateral समझ में आ गया? Yes, everyone is right. जयनाम, किरण, गरिमा, साई कृष्णा, राउडी, निहाल, very good. Very good, very good, very good. Now beta, you already know, and remember beta, why I'm telling you, in FMG they have asked 3 to 4 times the bones. They have simply given the bone in the X-ray. They have, like, they put an arrow and they have asked which bone is this. Students are studying everything in lower limb, but they are not aware of the bone. They still got confused in the exam. And see, it's like a very simple question. It's a very simple question. So if you see from above beta, this is the superior view. आप ऊपर से आप अपने legs को देख रहे हैं, sorry, foot को देख रहे हैं. So you can see this bone, it is called as the talus. Okay, it is called as the talus. Yes, it is called as the talus, and this is something which will form. Okay, and this is something which will form the ankle joint. Ankle joint. Ankle joint. बेटा अगर ध्यान से देखोगे तो ankle joint, ये कौन सी बोन है? टिबिया. ये कौन सी है? फिबुला. और नीचे कौन सी बोन आएगी? टैलस. टैलस. So ankle joint, it is formed from tibia, fibula and talus. Tibia, fibula and talus, right? Tibia, fibula and talus. So remember बेटा, ये talus हो गया. फिर ये वाली जो बोन होती है, that is called as calcaneum. It is called as calcaneum. कैल्केनियम जो है बेटा आपका हील बनाता है. When I say heel bone,
जो आपकी हील्स होती है ना, उसे कैल्केनियम कहते हैं, हील बोन. Okay, it is also called as the heel bone. If you just want to see, you can see in this picture also. देखो बेटा, ये कैल्केनियम है. कैन यू सी द कैल्केनियम बेटा? ये कौन सा व्यू है बेटा? अच्छा, ये वाला व्यू बता दो, ये कौन सा व्यू है? मीडियल, लेटरल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, विच व्यू इज दिस? कौन सा व्यू है? फटाफट से टाइप करो चैट बॉक्स में, विच व्यू इज दिस बेटा? Which view is this? Yes, Usman, very good. It is the lateral view. Noor, very good, beta. Jainam, very good, beta. It is the lateral view. It is the lateral view. Obviously बात है, तुम्हें वैसे भी पता होना चाहिए, जो छोटी वाली उंगली है, that is outside, तो वो lateral हो गया. जो बड़ी वाली है, the great toe, it is towards the midline. Body के midline के पास है. Yes. So yes, can you see the calcaneum? It is forming the heel part. Heel बोलते हो ना इसको, heel. तो कैल्केनियम बोन इट इज फॉर्मिंग द हील पार्ट, और कैल्केनियम के ऊपर यू कैन सी दिस टैलस बेटा, टैलस. और ये फिबुला है और उस साइड टिबिया है. तो टिबिया, फिबुला एंड टैलस, दे आर जॉइनिंग टू फॉर्म द एंकल जॉइंट. ओके, दे आर joining to form the ankle joint. I hope it is clear. The picture is clear in your mind beta. The picture is clear in your mind. So remember beta, we have talus, calcaneum. Okay, we have talus, calcaneum. Okay, this bone beta, it is navicular. It is navicular. Talus, calcaneum, navicular. Okay, now this is cuboid. Cuboid. Okay, this is cuboid. And beta, starting from the medial side, ये medial होगा, ये intermediate होगा, और ये lateral होगा. And इन तीनों bones का एक ही नाम है. इन तीनों bones का एक ही नाम है. And that name it is cuneiform. That name it is cuneiform. Now when I say cuneiform, it is medial cuneiform, जो body के midline के पास है. When I say intermediate, it is between medial and lateral. Medial, intermediate and lateral. Three cuneiform, one cuboid, one navicular, one talus, one calcaneum. So how many tarsal bones are there? Beta, comment in the section how many tarsal bones you can see over here. चलो फटाफट से नंबर काउंट करके बता दो, हाउ मेनी टार्सल बोन्स यू कैन सी ओवर हियर. जल्दी से बता दीजिए. यस कृति, जयनाम, हर्ष, टिम्पल, वेरी गुड बेटा. किरण, गरिमा, वेरी गुड. आई होप इट इज क्लियर एंड यू कैन वेरी वेल सी ओवर हियर. दिस इज टैलस, दिस इज कैल्केनियम, दिस इज नेविकुलर, दिस इज क्यूबॉइड, मीडियल cuneiform, intermediate cuneiform and lateral cuneiform. So we have 7 tarsal bones. We have 7 tarsal bones. Yes, everyone is right. So remember beta, whenever we are talking about the okay, so you already know, if we talk about the bones of the foot, you have to write it also, bones of the foot. Yes, bones of the foot. So remember, we have the tarsal bones, right? Tarsals, and they are 7 plus 7. 7 in the right leg and 7 in the left leg. 7 plus 7. Then, okay, in the tarsal bones, beta, in the tarsal bones, okay, you have to write the names also. You have to write the names, pen down the names also, beta. It is calcaneus, that is the heel bone also. Calcaneus, that is the heel bone. Okay, we have the talus, we have the talus. We have the navicular bone, navicular. Okay, we have the cuboid bone, we have the cuboid bone, and we have the cuneiform. And this cuneiform, it is medial, intermediate and lateral. Okay, so we have 7, right? Medial, intermediate and lateral. So I hope the bones of the foot are clear. The bones of the foot are clear. Now you already know the metatarsals beta. The numbering of the metatarsals starts from the great toe. So we have first metacarpal, the second metacarpal, sorry, metatarsal, the third metatarsal, the fourth metatarsal, and the fifth metatarsal. So how many metatarsals are there beta? How many metatarsals are there? How many metatarsals are there? Yes, we have 5 metatarsals. Very good. We have 5 metatarsals. Yeah, and phalanges beta.
Phalanges beta. So you can see we have two phalanges in the great toe, proximal and distal. Beta, what do you mean by proximal? Proximal का मतलब होता है anything which is closer to body. Anything which is closer to body. Proximal P से start होता है तो बोलते हैं पास, बॉडी के पास क्या है. और distal क्या हो जाता है बेटा? Distal it is away from the body. Distal it is away from the body. Distal it is away from the body. Yes, distal it is away from the body. तो पहले वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल, क्योंकि बॉडी के ज्यादा पास है. और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? डिस्टल. तो ग्रेट टो में वी हैव ओनली टू phalanges, proximal and distal. So in the other toe, okay, we have proximal, middle and distal. Proximal, middle and distal. Proximal, middle and distal. Proximal, middle and distal. So phalanges, they follow a rule that is 2 3 3 3 3, and ultimately you already know it is 14 in number. Again it will the marking would start from the great toe. Okay, in the great toe we have only two phalanges. The middle phalanx is absent in the great toe. So yes, in the great toe. So remember beta, अगर मैं पूछूं ये proximal phalanx होगा, middle distal phalanx होगा, proximal, middle, distal. I hope the picture is clear to each one of you. So yes, we have tarsals. Yes, we have metatarsals. We have metatarsals. Metatarsals, and these metatarsals are 5 plus 5, right? 5 in the right foot and 5 in the left foot. And then we have the phalanges. And then we have the phalanges, and phalanges are 14 plus 14. 14 plus 14. Now, now guys, excluding the hip bone, if I just talk about the lower limb bones, excluding, not including the hip bones, how many total bones will be there beta? How many total bones will be there? जल्दी से बता दो, जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर बता दो, how many total bones will be there? Yes, डिम्पल, वेरी गुड बेटा. ऑब्वियसली बेटा, अगर काउंट, चलो काउंट भी करा देता हूं. Femur, you already know we have 1 plus 1. Okay, femur, you already know we have 1 plus 1. 2. Patella, 2. Tibia, 2. Fibula, 2. Okay, then we have tarsals, 7 plus 7. Metatarsals and phalanges. So yes, everyone is right. Harsh, Kiran, very good beta. So remember, if you count them beta, basic math से इसको count करोगे, so bones of the lower limb, they are 2 hip bones. Okay, 2 hip bones, and we have we have 30 into 2, that is 60. 30 into 2, 60 bones of the lower limb. Okay, the lower limb, the true lower limb. Okay, so yes, hip bones have not included in the lower limb. Why? Because they are forming the pelvic, they are a part of pelvic bone. Up till this it is clear बेटा. फटाफट से एक थम्स अप दे दो जल्दी से. अगर बोन समझ में आ गए हैं, रीजन समझ में आ गए हैं, तो फटाफट से एक थम्स अप दे दो, जल्दी से एक थम्स अप दे दो. यस डिम्पल, वेरी गुड बेटा. हर्ष, जयनाम, किरण, नूर, उस्मान, वेरी गुड. कृति, वेरी गुड बेटा. चल, बोन्स क्लियर हो गए. अब मैं अभी बात कर रहा था जॉइंट से पहले, आने से पहले मैं तुमसे पूछ रहा था कि हिप बोन्स को हम लोग लोअर लिम्ब से ज्यादा पेल्विस का पार्ट मानते हैं. तो अगर मैं पेल्विस को डिफाइन करूं, मैंने बताया था ना एब्डोमेन होता है. ओके, बिलो द डायफ्राम वी हैव द एब्डोमेन. ओके, और एब्डोमेन के नीचे भी हमारा क्या आता है? पेल्विस पार्ट आता है, पेल्विस आता है. ठीक है, एब्डोमेन से भी नीचे क्या आता है? पेल्विस. तो मैं बोल रहा हूं कि पेल्विस structure is basically composed of 4 bones. So pelvis is basically composed of 4 bones बेटा. ये कौन सा व्यू है बेटा? Can anyone tell me which view is this? Can anyone tell me which view is this बेटा? Can anyone tell me which view is this? Yes बेटा, this is the anterior view. और ये आप पीछे की तरफ जा रहे हो, anterior से पीछे की तरफ जा रहे हो. Yes, this is the
या थोड़ा सा ऊपर की तरफ देख रहे हैं, या एंटीरियर तो है ही, एंटीरियर आगे वाला हो गया, पोस्टीरियर पीछे वाला हो गया, और आप ऊपर से देख रहे हो बेटा, यू आर वॉचिंग इट फ्रॉम अबव, तो ये थोड़ा सा सुपीरियर व्यू है, या एंटीरियर टू पोस्टीरियर देख रहे हो, बट ये आप ऊपर से देख रहे हो ना, देखो आगे की चीज भी दिख रही है, पीछे की चीज भी दिख रही है, सो आप ऊपर से देख रहे हो क्या दिख रहा है, तो पीछे की तरफ आपको पता है कौन सी बोन होती है, दैट इज कॉल्ड एज सेक्रम। पीछे की तरफ कौन सी बोन होती है बेटा, दैट इज सेक्रम। सेक्रम के नीचे क्या होती है, कॉकिक्स। वर्टिब्रा पढ़ाया हुआ है ना, वर्टिब्रस तो याद होंगे बेटा, ये कॉकिक्स हो गया, तो ये पीछे की तरफ है बॉडी में। आगे की तरफ क्या है, प्यूबिस है, जो हिप बोन का पार्ट है, ठीक है। इश्कियम है, जो सॉरी इश्कियम है, जो हिप बोन का पार्ट है, राइट, इश्कियम है जो हिप बोन का पार्ट है। सो यस, यू आर वॉचिंग इट फ्रॉम अबव बेटा, पीछे वाला स्ट्रक्चर्स भी दिख रहा है और आगे वाला भी, ठीक है। तो यस, यस बेटा, सो पेल्विस इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 बोन्स, ये 4 बोन्स से बना हुआ है। वी हैव 2 हिप बोन्स बेटा, 2 हिप बोन्स, ओके, वी हैव दिस हिप बोन्स, वी हैव sacrum and coccyx, we have sacrum and coccyx, ये भी मेंशन कर लेना अपना, अगर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। पेल्विस की बोन्स अगर पूछी जाए तो पेल्विस में हिप बोन्स भी आती हैं, ठीक है। वी हैव द sacrum and the coccyx, okay, so I hope this is clear to each one of you. I hope this is clear to each one of you guys. I hope this is clear to each one of you. Okay, I hope this is clear to each one of you. चलो फटाफट से एक थम्स अप दे दो, जल्दी से एक थम्स अप दे दो, ठीक है। ऐश वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। फटाफट से इसकी लेबलिंग बता दो बेटा, विच बोन इज दिस विच आई एम मार्क्ड विथ ए, विच बोन इज दिस विच आई एम मार्किंग विथ बी, विच बोन इज दिस विच आई एम मार्किंग विथ सी, एंड विच बोन इज दिस विच आई एम मार्किंग विथ डी। ए बी सी डी के आंसर दे दो तो मुझे पता चल जाएगा। डॉक्टर इमरान नुल हुडा कैलकेनियस, वेरी गुड। कृति, यस वेरी गुड बेटा। ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये एफएमजी में, इन एफएमजी एग्जाम इट हैज बीन आस्क्ड 2-3 टाइम्स, सो यस वी कैन नॉट इग्नोर कैलकेनियस है, ठीक है, ठीक है। एवरीवन इज राइट, उस्मान, गरिमा, अहमद, हर्ष, किरण, वेरी गुड बेटा। यस, बी नेविकुलर है, वी नेविकुलर है, यस। रिस्खान, कोई बात नहीं बेटा, yes, just attend the session, nothing I have told so special. Yes, D is cuboid, very good, very good, D is cuboid। B talus नहीं है बेटा, B is not talus, B बेटा talus ये है, talus ये है, B है नेविकुलर, yes कृति, वेरी गुड बेटा। और ये वाले जो है ये क्यूनिफॉर्म्स है बेटा, ये क्यूनिफॉर्म्स है, ये लेटरल साइड पे है, देखो ये छोटी वाली उंगली दिख रही है तो ये लेटरल हो गया ना, और ये बड़ी वाली है तो ये मीडियल हो गया, तो मीडियल तो उस साइड चला गया, तो ये बीच वाला कौन सा होगा, लेटरल के जस्ट पहले, इट इज इंटरमीडिएट, इट इज इंटरमीडिएट, यस क्यूनिफॉर्म बेटा। क्यूनिफॉर्म को भी पूरा बताना पड़ेगा, इट इज इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, इट इज इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, इट इज इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, यस उस्मान, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आई होप यू आर एबल टू सी बेटा। देखो कैलकेनियस नीचे की तरफ है, अगर तुम एक पिक्चर और देखना चाहते हो, टैलस ये रहा, नेविकुलर ये रहा, ठीक है, क्यूबॉइड ये रहा, फिर ये लेटरल हो गया, देखो बॉडी का मिड लाइन ये है, तो बॉडी के मिड लाइन के पास ये है, ग्रेट थंब है, ग्रेट टो है, और ये लेटरल साइड हो जाएगी, तो ये लेटरल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, और ये क्या हो जाएगा, मीडियल क्यूनिफॉर्म, मीडियल क्यूनिफॉर्म, यस। चल, अब इतना क्लियर है तो फटाफट से, ओके, ये सब तो तुम्हें पता चल ही गया है, ठीक है। चलो अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताने लायक है नहीं, ओके। एक्सरेज में भी आप बेटा देख सकते हो, एक्सरेज में भी देखो बेटा, ये तो टैलस है, ठीक है, एक्सरे पूछा गया था एग्जाम में, टैलस है, सुपीरियर व्यू दिखा रहे हैं बेटा, सुपीरियर व्यू दिखा रहे हैं, कैल्केनियम है, ये नेविकुलर है, ये क्यूबॉइड है, ओके, ये क्यूबॉइड है, और ये मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म और लेटरल क्यूनिफॉर्म है, लेटरल क्यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, और मैंने बताया था ग्रेड टो से नंबरिंग स्टार्ट होती है मेटाटार्सस की, 1 2 3 4 और 5, और सारे फैलेंजेस, इसमें प्रॉक्सिमल फैलेंज, डिस्टल फैलेंज, सो ये एक्सरे में आप लोग को देखना आना चाहिए, ठीक है। इट इज द सुपीरियर व्यू बेटा, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू, आई होप दिस इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू, just give me a thumbs up beta if it is clear to each one of you,
Okay, just give me a thumbs up if it is clear to each one of you. All the bones are clear to each one of you. The bones and the regions are clear to each one of you. Yes, Jainam, Harsh, Ash, Garima, Kriti, Kiran, Amira, Dimple, Usman. Very good. Very good. Chal. Now coming on to the joints of the lower limb. Coming on to the joints of the lower limb. That is again a very important topic. Very important topic बेटा. Multiple number of times MCI में क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाता है. जरूर पूछा जाता है. तो यस, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है. तो पहले बेसिक बेसिक चीजें जान लेते हैं, फिर हम हिप बोन तो पढ़ेंगे ही डिटेल में. ठीक है, हिप बोन तो पढ़ेंगे ही, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा क्योंकि हमें कोई जल्दी नहीं है. सो द वेरी फर्स्ट जॉइंट बेटा विच यू कैन सी, इट इज this joint. Okay, this is this joint, and this joint, it is called as pubic symphysis. It is called as pubic symphysis. Now अब पहले ये बताओ, प्यूबिक बोन किसका पार्ट है? हिप बोन का. प्यूबिक बोन किसका पार्ट है? हिप बोन का. अगर ध्यान से देखोगे बेटा, इफ आई जस्ट ट्राई टू शो यू ओवर हियर, हिप बोन के तीन पार्ट्स होते हैं बेटा. हिप बोन के तीन पार्ट्स होते हैं. अपर पार्ट इट इज कॉल्ड एज द इलियम. अपर पार्ट इट इज कॉल्ड एज द इलियम. दिस रेड वाला पार्ट इट इज कॉल्ड एज द प्यूबिस, एंड दिस ब्लू पार्ट इट इज कॉल्ड एज द इश्कियम. इश्कियम. तो हिप बोन, अगर मैं हिप बोन की बात करूं तो हिप बोन हैज थ्री पार्ट्स. इलियम, ओके, अपर एक्सपैंडेड पार्ट. प्यूबिस, लोअर एंटीरियर पार्ट, ओके, एंटीरो इंफीरियर पार्ट है ये. और इश्कियम भी, इट इज लाइक मोर ऑन द बैक साइड, राइट? So it is, yeah, we have ilium, ischium and pubis. Ilium, ischium and pubis. Now if you see beta over here, so this is the pubis bone. Okay, this is the pubis. This is also the pubis bone. This is ischium, 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 and this is beta ilium. This is ilium, ilium. So you can see that pubis is a bone. This is the right side and this is the left side. ये तो पता ही है ना, normal anatomical position से हम लोग जब देखते हैं, this is the right and this is the left. So you can see that the right pubis and the left pubis, they are joining together with each other. Both are bones. Both the bones are joining together and they are forming a joint. जब भी दो bones आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? Joint. And this is called as pubic symphysis. Pubic symphysis beta. This is called as pubic symphysis. You already know. Yeah, you already know pubic symphysis. It will be formed in the midline of our body. It will be formed. This joint will be formed in the midline of our body. This joint will be formed in the midline of our body. So I hope you all have got this right. That is the pubic symphysis. Remember, this question has been asked 3 times in the FMG exam. This has been asked 2 to 3 times minimum. It has been asked in the form of X-ray or direct question. Okay, so all the information that is required I'll give you over here. It is a secondary cartilaginous joint. So we have various types of joints. Remember, it is secondary cartilaginous joint. Okay, it is a type of secondary cartilaginous joint. This question has been asked. Okay, this question has been asked in the exam. So how they have asked, they have shown an X-ray also. I will tell you how they have asked this question. So remember beta, if we say secondary cartilaginous joint, you already know we have this pubic symphysis. Okay, this is also a bone, pubic symphysis. Okay, now we have left pubic symphysis and right pubic symphysis. Dono bones hai. These two are bones only, right? These two bones basically, they are covered with, okay, they are covered with hyaline cartilage. Okay, they are covered with hyaline cartilage. I'm showing you what is meant by cartilaginous joint. They are covered with hyaline cartilage, and yes, in between beta, they are joined together. They are joined together by a cartilage, and this cartilage, it is called as the fibrocartilage. This cartilage, it is called as the fibrocartilage. This is called as the fibrocartilage.
And remember beta, the fibrocartilage, it do not ossify. Okay, it do not ossify. Okay, the fibrocartilage do not ossify. Ossify मतलब ये बोन नहीं बनेगा बाद में. So secondary cartilaginous joint क्या होता है कि both the pubic bones or any bones will have covering of hyaline cartilage, and in between they are filled with fibrocartilage. Fibro का मतलब ही क्या होता है बेटा? Hard, fibrous. Okay, fibrous means hard. Okay, so it is a type of permanent joint beta. Okay, it is a type of permanent joint. Okay, permanent joint. And remember, these types of joints, mostly they are present in the midline of our body, mostly present in midline of the body. For example, between manubrium and sternum, manubriosternal joint, xiphisternal joint. You know, sternum is present in between. Okay, so sternum has three parts: manubrium, body, and xiphoid process. Okay, so between manubrium and body, manubriosternal joint, xiphisternal joint. So these are all secondary cartilaginous joints. These are all secondary cartilaginous joints. So remember, mostly they are present in midline of the body, midline of the body, right? So one is this pubic symphysis, that is formed by the right pubis and left pubis. And pubis, you already know, it is part of hip bone. It is part of hip bone. Okay, it is part of hip bone. It is part of hip bone, right? Pubis. It is part of hip bone. ये क्लियर है बेटा? फटाफट से एक थम्स अप दे दो जल्दी से चैट बॉक्स में, इफ दिस इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू, इफ दिस इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू, if this is clear to each one of you. Yes, Jainam, Dippal, Kiran, Harsh, very good beta, very good, very good. Ash, Sai Krishna, Kriti, Amira, very good beta. Now second type of joint beta, second type of joint that you have to keep in mind, it is the ball and socket joint. Okay, we have this hip joint. Okay, hip joint. The second joint, it is the hip joint. And remember, the hip joint, it is an example of ball and socket joint. Again, this I don't think I have to explain it also. Ball and socket joint. This is ball and socket joint. So hip joint, it is formed from the head of the femur bone, head of the femur bone, head of the femur bone. Okay, and yeah, we have the acetabulum, acetabulum, okay, of hip bone, acetabulum of hip bone, acetabulum of hip bone. If you can see over here beta, so yes, if I have the picture with me, okay, let me just check it now beta. This is called as the acetabulum. Okay, this, okay, where the, this is like a socket. ये एक socket की तरह होता है जिसमें the head of the femur bone basically articulates. So this is like a socket and this is the head, and it articulates like this. So yes, you can see it over here also. It is the head part of the femur bone. It is the head part. It is articulating in the socket. Okay, it is articulating in the socket. If you can see, yes, you can see very well. This is the head part. Okay, and it is articulating in the socket part, right? So yes, if you can see over here, beta, this is the head and this is the, yes, acetabulum. This is the acetabulum, right? So yes, this is the part of the hip bone, right? This is the part of the hip bone. So second one, I hope everyone has written in your notes. It is the hip joint. It is the hip joint. Okay. Now the third one, beta, it is okay between. Okay. Now we have the knee joint beta, the true knee joint. Okay. The third one, that is the knee joint. Okay. Knee joint. Basically, remember beta, if it is a true knee joint, it will be like only femur and tibia. It is only femur and tibia. And yes, indirectly we have
femur and patella also forming the knee joint. Femur and patella also forming the knee joint, okay, indirectly. So it is like a true knee joint, okay, and it is like an indirect. So when I say knee joint, I can say femur, tibia, and patella. When I say true knee joint, it is only femur and tibia, okay. Now my question is, which bone is not included in the formation of knee joint? Femur, patella, tibia, fibula. Which bone is not included in the formation of knee joint? Femur, patella, tibia, fibula. Chalo. Yes, Jainam fibula is not included in the knee joint. It is not included in the knee joint. Okay, it is not included in the knee joint. Bit of femur and tibia. Between the femur and the tibia, remember it is a type of condylar joint. Okay, it is a type of condylar joint. Now, when I say condylar joint, beta, you are very well aware. Yes, Amira, Dimple, Garima, Kiran, Harsh, very good, beta. When I say condylar joint, beta, you already know the femur is having two condyles, beta. The femur is having two condyles, medial condyle and the lateral. जो बॉडी के मिड लाइन के पास है बेटा, वो कौन सा कॉन्डाइल होगा? मीडियल कॉन्डाइल. और जो बॉडी के मिड लाइन से दूर है वो लेटरल कॉन्डाइल. Rounded projection, it is a type of condylar joint. Even the tibia also will be having these condyles, right? So yes, this is the tibia. So it is a type of a condylar joint. But when I say femur and patella, it is a type of saddle joint. Okay. कुछ बुक्स में ना इसको प्लेन भी बोला गया है, बट रिमेंबर बेटा, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अपडेट, saddle beta, you have seen on the surface, okay, on the horse, when you sit on the horse, there is like a saddle like surface, right? A seat जो होती है ना हॉर्स के ऊपर, जिसके ऊपर बैठते हो, तो उसको सैडल बोलते हैं. तो it is like a concavo convex surface. Okay, it is like a concavo convex surface. Concavo convex surface. So it is absolutely like that, right? So yes, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है. इट इज लाइक कनकेवो कन्वेक्स सरफेस. ओके, ऊपर कनकेव बन रहा है, ठीक है, ऊपर कनकेव बन रहा है और नीचे क्या बन रहा है? कन्वेक्स. सो इट इज जस्ट लाइक द सैडल ऑफ अ हॉर्स. सो दैट्स व्हाई द नेम, इट इज सैडल जॉइंट. इट इज सैडल जॉइंट. नाउ बेटा, over here you can easily see, over here you can easily see between tibia and fibula, basically two joints are forming. Okay, this is called as the superior tibiofibular joint, and this one, it is called as the inferior tibiofibular joint. Inferior tibiofibular joint. We have the superior tibiofibular joint and the inferior tibiofibular joint. Now, superior tibiofibular joint, beta. Okay, superior tibiofibular joint, it is a type of plain synovial joint. Okay, it is a type of plain synovial joint. Okay. Now, when I say inferior tibiofibular joint, it is a type of syndesmosis. Okay, it is a type of syndesmosis. Syndesmosis का मतलब क्या होता है? For example, बेटा, suppose this is the tibia. This is the tibia, and remember we have this fibula. Okay, this is fibula. So they both are joined together or connected via ligament. Okay, they both are connected via ligament. So syndesmosis simply means that long bones, they are connected via ligament. Connected via ligament, beta. Long bones, they are connected via ligament, right? So we have the inferior tibiofibular joint. Okay, inferior tibiofibular joint. Okay, that is a type of syndesmosis, and syndesmosis is a type of fibrous joint only. Okay, it is a type of fibrous joint only. Now,
We have this ankle joint, beta. You already know the ankle joint. Ankle joint. Now, ankle joint, okay, it is a type of hinge joint. Hinge joint. Now, when I say hinge joint, beta, you should remember that it allows the movement, okay, which allows only one movement, okay. Jaise, we have the door can either go away or like come closer, like in one direction, okay. The movement is only in one direction, okay. So yes, which allows only flexion and extension, which allows only flexion and extension, which allows only flexion and extension, beta. So if you want to see hinge joint, so yeah, let me tell you, beta. Now this is the ankle joint, beta. This is the ankle joint, okay. This is the ankle joint, and when I say ankle joint allows the movement only in one direction, try to see over here, beta. This upper surface, it is called as the dorsum of foot. It is called as the dorsum of foot. और जो ये लोअर सरफेस होता है जिसको हम लोग तलवा बोलते हैं, द लोअर सरफेस, इट इज कॉल्ड एज द सोल ऑफ द फुट. इट इज कॉल्ड एज द सोल ऑफ द फुट. जो एंटीरियर पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉर्सम ऑफ फुट. और नीचे वाले तलवे को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द सोल ऑफ द फुट. सोल ऑफ द फुट. Normally, angle is 90 degree. Normally, angle is 90 degree. Now, whenever the dorsum of the foot will approach the leg, okay, अपने पैर को उठाने की कोशिश करो, okay, whenever the dorsum of the foot will approach the leg, तो angle क्या हो जाएगा, angle decrease हो जाएगा. So this is called as flexion. This is called as flexion. Flexion का मतलब ही क्या होता है, we are decreasing the angle between the two body parts. We are decreasing the angle between the two body parts. और अगर यही सोल ऑफ द फुट में नीचे ले जाओ, बाहर की तरफ ले जाओ, द एंगल विल इंक्रीज एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन. एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन. तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन आप लोग को समझ में आना चाहिए, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, okay, at ankle joint. So that's why it is only allowing the movement in one direction, either up either down, just like the wrist joint, okay. So yes, ankle joint, it is a type of hinge joint. Ankle joint, it is a type of hinge joint. Yes, we have yeah, बेटा टार्सल बोन्स के बीच में भी होती है joints. So yes, we have the intertarsal joints. Intertarsal joints, remember beta, these are plane joints. These are plane joints. Their articular surface is plane. Their articular surface is plane. Okay. अब ये tarsals है और ये metatarsals है. Okay. तो इन दोनों के बीच में भी joints है. तो this joint, beta, it is called as metatarsophalangeal joint. Metatarsophalangeal, sorry. Okay, let me just, yeah. So this joint between the tarsals and the metatarsals, it is called as tarso-metatarsal joint. Tarso-metatarsal joint. And remember, it is also plane joints, synovial plane joints. Plane joints, synovial, okay. These are all synovial plane joints, okay. And yes, we have, okay, if you want to see beta, if you want to see over here, you can very well see beta कि ये वाला bone क्या है, these are the tarsals. These are the tarsals, ठीक है. Tarsals के बीच में जो joints है बेटा, tarsals के अलग अलग bones है. We have 7 bones, okay, in the tarsal. Like we have 7 tarsal bones, right? ये tarsal bones आपस में, they are also forming joints. ये आपस में जुड़े हुए by a plane synovial joint. तो इसको हम लोग नाम क्या देंगे, intertarsal. Intertarsal joints. Now when I say intertarsal beta, inter का मतलब होता है दो के बीच में. Inter means in between two. So all of these joints will be like intertarsal joints. I will be coming to more variants. Okay. Now between the tarsals and the metatarsal, metatarsal भी bone है और tarsals भी bone है.
So this joint beta between metatarsal and tarsal. So what you have to do, you have to omit ALS. So you have to write down tarso metatarsal joint. Tarso metatarsal joint. Tarso metatarsal joint, right? And between the metatarsals and the phalanges, between the metatarsals and the phalanges, we have metatarso. Again, ALS omit phalangeal joint, metatarso phalangeal joint. और phalanges के बीच में, बेटा phalanges भी तो बोन ही है, phalanges के बीच में you can see these joints and it is in between the phalanges. तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, interphalangeal joint. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, interphalangeal joint. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, interphalangeal joint. So remember beta, interphalangeal joint is also a type of hinge joint. It is also a type of hinge joint which allows movement in only one direction, that is flexion and extension. Okay. Now we have metatarsophalangeal joints. Metatarsophalangeal joints. Okay. Yeah. These are ellipsoid joints, beta. These are ellipsoid joints. Now when I say ellipsoid joints beta, means they have elliptical shape. इनकी जो shape होती है बेटा वो बिल्कुल elliptical होती है, अंडे जैसी होती है बिल्कुल shape. जो joining surface it is in the form of elliptical shape. So that is, yeah, it is ellipsoid joints. Tarso-metatarsal, it is synovial plane joint. It is synovial plane joint. And intertarsal joints, these are also plane synovial joints. Okay, plane synovial joints. So again just summarizing all the yeah joints. The first one that you have to remember, pubic symphysis, hip joint, knee joint. Okay, the true knee joint, it is between the femur and tibia. Other one, it is femur and patella. That is an indirect joint and it's type of saddle joint. Superior tibiofibular joint, क्योंकि ऊपर भी tibia and fibula they are connecting with each other, and on the down portion they are also connecting. It is inferior tibiofibular joint. We have ankle joint, hinge joint, which I already told you, it allows movement only in one direction, flexion and extension, right? Ankle joint, it is composed of tibia, fibula and the talus. Then coming on to the foot part, beta. Coming on to the foot part, you already know between the tarsal bones. Between the tarsal bones, we have intertarsal joints. Okay, tarsal and metatarsal, we have tarso metatarsal joint. Between metatarsals and phalanges, metatarsophalangeal joint. And lastly, in between the phalanges, we have interphalangeal joint. Interphalangeal joint. So I hope all the joints are clear to each one of you. I hope all the joints are clear to each one of you. Just give me a thumbs up in the chat box बेटा अगर ये सारे joints तुम लोग को समझ में आ गए हैं. तो यहाँ पे 6 तक तो नंबरिंग की हुई थी, तो या 6 तक तो नंबरिंग की हुई है, तो 7th ये हो गया. Then we have 8th, 9 and 10 parts, right? 10 joints आप लोग को पता होने चाहिए. Yes, हर्ष, जयनाम, ऐश, किरण, गरिमा, डिम्पल, very good बेटा, very good. रिजान, very good. चलो, बोन्स हो गए, रीजन्स बोन्स हो गए, जॉइंट्स हो गए. ठीक है, फटाफट से अब अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ओके, बिफोर कमिंग टू द क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क एवरीवन, this was the image which was given in the exam and they have asked which type of joint it is. I want the answers in the chat box. They have marked this and they have asked which type of joints is this. चलो आंसर बताओ फटाफट से. यस, डिम्पल, जयनाम, कृति, आह्लादिता. बेटा प्यूबिक सिम्फाइसिस है, वो ऑप्शन में ही नहीं है, वो ऑप्शन में ही नहीं है. पहले तो जॉइंट पहचानो. तुम्हें पता है ये प्यूबिस बोन है, ये भी प्यूबिस बोन है, तो दोनों जॉइंट करेंगे, सो दे विल फॉर्म प्यूबिक symphysis. Pubic symphysis. And remember, pubic symphysis is again a type of secondary cartilaginous joint. Secondary cartilaginous joint.
समझ में आया सब लोगों को? सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है। क्लियर हो गया सब लोगों को? फटाफट से एक थम्स अप दे दो समझ आ गया हो तो। चलो, हर्ष टेम्पल गरिमा जयराम किरण ऐश, आज मैं हिप बोन करा के रहूंगा क्योंकि लोअर लिम्ब इज अ वेरी वास्ट टॉपिक बेटा। तो आप लोग को यू हैव टू बी विद मी थ्रू आउट। जो थोड़ा सा पेन लेके लेक्चर सुनेगा, ध्यान से नोट्स बनाएगा, उसको पूरा समझ में आएगा। ठीक है? सो मैंने अपनी तरफ से सारी चीजें बहुत बेसिक से स्टार्ट की है, बोन्स तक, रीजन्स तक बताया। थाई किसको बोलते हैं, लेग किसको बोलते हैं, फुट किसको बोलते हैं, हील बोन कौन सी है, ठीक है, एंकल जॉइंट, सारे जॉइंट्स मैंने तुम लोग को, एक एक बोन तुम लोग को दिखाई है, टाइप ऑफ जॉइंट्स और क्यों कहते हैं वो भी बताया है। ठीक है? सो ओके ओके okay, now this is the posterior view. Okay, chalo, I'll come to this also. Now before, let us just start with the parts of the hip bone, parts of the hip bone. Okay, and side determination, parts of the hip bone and the side determination. Okay, now beta, remember the hip bone. Okay, so let us just start with the hip bone. Okay, it's more of like a superior view beta, superior view. Yeah, superior view देख रहे हैं हम लोग. Now you already know the hip bone. Okay, if I say hip bone, remember beta, hip bone, it is a large irregular bone. It is a large irregular bone. Okay, and these two hip bones, this is the right hip bone according to the normal anatomical position, and this is the left hip bone. Basically they constitute the pelvic girdle. तो पेल्विक किस किस का बना हुआ है मैंने पहले भी बताया था, ये सेक्रम बोन हो गई, ये कॉकिक्स हो गई जो पीछे की तरफ है, सेक्रम, सेक्रल वर्टिब्रा, कॉकिक्स, ठीक है, और ये दो हिप बोन्स. सो हिप बोन आल्सो constitutes the pelvic girdle. Okay, it also constitutes, okay, you can just write it over here. Yeah, it constitutes the pelvic girdle, right? So this is like this, you can see over here, this is the pelvic girdle बेटा. ठीक है, pelvic girdle देखो किन किन बोन से बना हुआ है, सेक्रम है, कॉकिक्स आ रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा मैं तो एक लाइन में दिखा रहा हूँ, वन डायमेंशन में दिखा रहा हूँ, राइट? नाउ द हिप बोन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स. The hip bone basically consists of three parts. Remember, we have ilium, ischium, and pubis. Ilium, ischium, and pubis. Ilium, ischium, and pubis. Now remember beta over here. Yes, Amira, very good beta. It is the ilium, ischium, and pubis. Be very clear with the spelling. It is ILI beta. ILE जो है वो ilium हो जाएगा, और ILEUM किसका पार्ट है? मैंने एब्डोमेन में आप लोगों को पढ़ाया था. I want the answers everyone. Yeah, I want the answers everyone. ilium और कहाँ देखने को मिलता है? कौन से पार्ट एब्डोमेन में किसका पार्ट है वो? और एक ये ilium है. तो be very careful with the, yeah, spellings. Be very careful with the spellings. Yeah. Now beta, you already know ilium, it is the superior. देखो अब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये देखो ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे वाला पार्ट है. So this is ilium. तो ये है ilium. तो ilium I can say it is superior, ऊपर की तरफ है. Yes, it is superior expanded part. It is superior expanded part. Okay, it is the superior expanded part. Okay, ischium, it is the posterior, it is the posterior inferior part. देखो इश्कियम, अगर यहां पे देखोगे बेटा, इश्कियम, इश्कियम एक तो नीचे की तरफ है, इलियम ऊपर की तरफ है, तो इलियम सुपीरियर हो क्या, इश्कियम नीचे की तरफ है, तो क्या हो जाएगा? यस, इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. वेरी गुड कृति. ड्यूडेनम, जेचनम और इलियम बताया था ना. सो यस, इश्कियम नीचे की तरफ है बेटा और पीछे की तरफ है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं पोस्टीरो इंफीरियर पार्ट.
It is also called as the posterior inferior part. And when we come to pubis, pubis तो अभी मैंने तुम लोग को सबको दिखाया है. We have this pubis over here, pubis. तो प्यूबिस का है इलियम के कंपैरिजन में नीचे ही है, सो दिस इज इंफीरियर ओनली, बट ये आगे की तरफ है. प्यूबिस इज फॉर्म लाइक इट इज इन द फ्रंट. सो रिमेंबर बेटा, वी हैव प्यूबिस, इट इज द एंटीरो इंफीरियर पार्ट. एंटीरो इंफीरियर पार्ट. इंफीरियर में आपको दो बोन्स देखने को मिलती है, प्यूबिस और इस्कियम. प्यूबिस आगे की तरफ होती है एंड एज कंपेयर टू प्यूबिस, इस्कियम इज अ लिटिल बैक. So I hope the picture clarity is clear to everyone. Okay, picture clarity is clear to everyone. Let us just see over here. Let us just see over here बेटा. चलो एक बार इसको थोड़ा सा ना पिक्चर को पहले क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि इस बोन को समझने के लिए पिक्चर बहुत जरूरी है. तो अब ये कौन सा सेक्शन लिया है मैंने, ये कौन सा सेक्शन है, फटाफट से बताओ ये कौन सा सेक्शन लिया है मैंने. I want the answers in the chat box. I want to know which section is this. I mean, which view is this beta? Which view is this? The first one. अब इसको भी ध्यान से बेटा अगर देखोगे, बेटा, तो अब ये देखो जहां पे एसिटाबुलम दिख रहा है. ओके, देखो बेटा, ये बॉडी का आगे का हिस्सा है एंटीरियर, ये बॉडी का पीछे का हिस्सा हो गया पोस्टीरियर. ग्लूटियस रीजन दिख रहा है सब लोगों को, हिप रीजन दिख रहा है, ठीक है. और ये व्यू कौन सा है बेटा, ये लेटरल व्यू है. ये लेटरल व्यू है. लेटरल व्यू मतलब आप बॉडी को साइड से देख रहे हो, बॉडी को, यू आर वाचिंग द बॉडी फ्रॉम द साइड. यस, तो लेटरल व्यू है. ये आगे की तरफ है और ये पीछे की तरफ हो गया ये वाला हिस्सा, ठीक है. और ये आप लोग जो हिप बोन है, यू आर वाचिंग इट फ्रॉम द साइड, यू आर वाचिंग इट फ्रॉम द साइड. इतना क्लियर हो रहा है सबको, इतना क्लियर हो रहा है बॉडी के हिसाब से. फटाफट से एक थम्स अप दो कि ये चीज समझ में आई कि हाँ, वी आर वाचिंग द लेटरल व्यू बेटा, वी आर वाचिंग द लेटरल व्यू. हाँ चल, हर्ष, ऐश, करिमा वेरी गुड, जैनम वेरी गुड, रिज खान वेरी गुड, किरण वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा. चलो 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 चलो, ऑब्वियसली बात है. अब ध्यान से देखो बेटा, ये वाला पार्ट बॉडी के मिड लाइन के पास है, ये बॉडी का मिड लाइन है, ठीक है, ये बॉडी का मिड लाइन है. तो ये एक फ्लैट पार्ट है जो एक मिड लाइन के पास है और एक बॉडी के उस साइड है. तो ये पिक्चर आप लोग को समझ आ रही है ना कि एक बॉडी के उस साइड है और एक बॉडी के मिड लाइन की तरफ है. ये एक ऐसा सरफेस है. तो ये वाला जो सरफेस आप लोग को दिखा रहा हूं बेटा, जहां पे आप लोग ये देख सकते हो, ये है लेटरल व्यू. ओके, नाउ दिस इज द लेटरल व्यू. ओके, लेटरल व्यू. और लेटरल व्यू बेटा ध्यान रखना, ये एंटीरियर साइड हो गई और ये एंटीरियर से पीछे की तरफ ये हो गई हमारी पोस्टीरियर साइड, ये हो गई हमारी पोस्टीरियर साइड, राइट. और ये वाला जो व्यू है बेटा, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, इसको बोलते हैं मीडियल व्यू. ओके, इसको बोलेंगे मीडियल व्यू. क्यों मीडियल व्यू बोलेंगे, अब तुम लोग खुद ही देख रहे हो कि ये वाली जो पिक्चर है बेटा, इफ यू कैन सी बेटा, ये वाला जो सरफेस है ये बॉडी के मिड लाइन के पास है, तो इसको मीडियल बोलेंगे. और इसके जस्ट अपोजिट वाला, इसके बाहर वाला सरफेस क्या हो जाएगा, लेटरल. और इसमें जो ये वाला पार्ट है ना बेटा, ये देखो सैक्रम के साथ जॉइंट बना रहा है, तो इसलिए ये वाला पार्ट जो है ना हम लोगों को दिख नहीं रहा. ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि वो जॉइंट बना रहा है सैक्रम के साथ. बाकी ये वाला पार्ट अगर देखोगे तो ये वाला पार्ट तो ये इस तरीके से दिख ही रहा है यहाँ पे, इस तरीके से दिख ही रहा है यहाँ पे, है ना. तो ये तो मीडियल व्यू हो गया, ठीक है. मीडियल जो है हम लोग सरफेस देख रहे हैं, राइट. और ये वाला क्या हो गया, लेटरल, जहां पे तुम्हें एसिटाबुलम दिख रहा है. ऑब्वियसली बात है बेटा, एसिटाबुलम जहां पे तुम्हें दिख रहा है, तो तुम्हें इतना बेसिक क्लियर तो हो जाना चाहिए, एसिटाबुलम तो लेटरल साइड पे ही वो बना रहा है ना जॉइंट. इट इज लेटरल साइड पे ही तो जॉइंट बना रहा है, मीडियली तो एसिटाबुलम नहीं होता ना, ठीक है. तो इतना क्लियर हो गया, तो साइड डिटर्मिनेशन लिखो. साइड डिटर्मिनेशन, साइड डिटर्मिनेशन कहने का मतलब है हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर दिस बोन इज राइट और लेफ्ट. हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर दिस बोन इज राइट और लेफ्ट.
The very first point that you have to remember, it is iliac crest. I will come to these points, no need to worry. The iliac crest, it is always present above. Iliac crest, बेटा ये देखो, ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है, ठीक है, और ये लेटरल व्यू है, ये लेटरल व्यू है, लेटरल में आप देख रहे हो इसको। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इलियम का, ओके, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये इलियम है, ये इलियम है। इलियम का ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं इलियाक क्रेस्ट। इलियाक क्रेस्ट, देखो एक सिंपल लाइन होती है, देयर इज अ सिंपल लाइन बेटा। इफ दिस लाइन बिकम्स थिक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉर्डर। एक लाइन होती है, इफ इट बिकम्स थिक इट इज कॉल्ड एज बॉर्डर, एंड इफ इट इज बिकमिंग मोर थिक इट इज कॉल्ड क्रेस्ट। क्रेस्ट, तो ये इलियाक क्रेस्ट है क्योंकि ये इलियम बोन का पार्ट है और ये इलियाक क्रेस्ट है, एंड इट इज ऑलवेज सिचुएटेड अपवर्ड्स। तो पहला, जब भी आप ये बोन, whenever you will know, whenever you want to identify whether it is like right or left, you have to put the iliac crest in like above. iliac crest नीचे की तरफ नहीं होता, हमेशा ऊपर की तरफ होता है। Now we have a foramen beta, and that is called as obturator foramen. I will come to all these topics, no need to worry. We have an obturator foramen beta, and remember the obturator foramen, it is situated below. The obturator foramen, if you can see बेटा, ये गैप दिख रहा है सब लोगों को, इसको हम लोग बोलते हैं obturator foramen. Obturator foramen, foramen का मतलब होता है large hole और gap, large hole और gap. You can see this obturator foramen, and remember बेटा obturator foramen हमेशा नीचे की तरफ होता है, हमेशा नीचे की तरफ होता है। अब तीसरा मुझे सारे आंसर देंगे कि एसिटाबुलम, एसिटाबुलम लेटरली प्रेजेंट होगा या मीडियली? एसिटाबुलम लेटरली प्रेजेंट होगा या मीडियली? चलो जल्दी से आंसर दो फटाफट से। एसिटाबुलम लेटरली प्रेजेंट होगा या मीडियली? जयनाम लेटरली, कृति लेटरली। डिम्पल, रिज, किरण, ऐश, गरिमा वेरी गुड, मनीष वेरी गुड बेटा। एसिटाबुलम हमेशा लेटरली प्रेजेंट होता है बेटा। अभी तो मैंने तुम लोग को दिखाया था पिक्चर में, ऑब्वियसली बात है तुम लोगों ने पिक्चर खुद ही देख ली है। एसिटाबुलम ही तो जॉइंट बना रहा है, ठीक है, और ये बॉडी के साइड में प्रेजेंट है, ठीक है ना। मिड लाइन में तो कहीं तुम्हें दिख ही नहीं रहा, यहाँ कहीं एसिटाबुलम दिख रहा है इस सरफेस पे? नहीं दिख रहा। एसिटाबुलम तो इसके अपोजिट वाले सरफेस पे, दैट इज द लेटरल सरफेस, राइट। हबीबा इमाम वेरी गुड बेटा। सो रिमेंबर बेटा, acetabulum it is laterally located, and the fourth one that you have to keep in mind, we have ischial tuberosity. Ischial tuberosity it is present posterior-inferiorly. अरे बाप रे बाप, इतना डिफिकल्ट नाम, पोस्टीरो इंफीरियर इश्कियल। इश्कियल का मतलब हो गया इश्कियम बोन। ऑब्वियसली बात है कि हिप बोन के तीन पार्ट्स होते हैं, हिप बोन के तीन पार्ट्स होते हैं, इलियम, इश्कियम एंड प्यूबिस। इश्कियम तो एक ट्यूबरोसिटी होती है। ट्यूबरोसिटी की अगर बेटा बात की जाए तो वो ट्यूबरोसिटी इस तरह की होती है, लार्ज राउंडेड प्रोजेक्शन विच यू कैन सी, दिस लार्ज राउंडेड प्रोजेक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबरोसिटी। और क्योंकि ये कौन सा बोन है, इश्कियम, तो नाम क्या हो जाएगा, इस पूरा ब्लू कलर जो क्या है ये इश्कियम बोन है, तो इस ट्यूबरोसिटी का नाम क्या हो जाएगा, इश्कियल ट्यूबरोसिटी। अब मुझे बताओ ये इश्कियल ट्यूबरोसिटी आगे की तरफ प्रेजेंट है या पीछे की तरफ प्रेजेंट है? यू गाइस विल टेल मी, इश्कियल ट्यूबरोसिटी आगे की तरफ प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन फ्रंट और इट इज प्रेजेंट बिहाइंड? In the normal anatomical position, this ischial tuberosity will be present in front or behind? Back. Yes, Janam, very good, beta. It is back, very good. Behind, Harsh, very good. Manish, very good. It is behind only. Yeah, it is behind. ऑब्वियसली बात है, तो ये पोस्टीरो इंफीरियरली है और ये भी नीचे की तरफ ही प्रेजेंट है ना, जैसे ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है, इसी तरीके से इश्कियल ट्यूबरोसिटी भी है। तो ये हिप बोन का नीचे वाला पार्ट है, तो इट इज पोस्टीरो इंफीरियरली। सो कीपिंग ऑल दीज पॉइंट्स इन माइंड, यू कैन आइडेंटिफाई, ओके, ये वाइवा में हेल्प करेगा, दिस हैज नथिंग टू डू विद द एग्जाम। वाइवा में हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द गिवन हिप बोन वेदर इट इज राइट और लेफ्ट, ओके, whether it is right or left. Yes, Habiba, very good beta, very good.
So I hope the side determination is clear. The side determination is clear. जल्दी से एक थम्स अप दे दो कि पार्ट समझ में आ गए, साइड डिटर्मिनेशन समझ में आ गया, पार्ट समझ में आ गए, साइड डिटर्मिनेशन समझ में आ गए. हर्ष, ऐश, वेरी गुड बेटा. जयनाम, किरण, डिम्पल, वेरी गुड, वेरी गुड. रिस्खान, गरिमा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. Now, coming on to the osteology of the ilium bone. Osteology of the ilium bone. Okay. Osteology of the ilium. Before coming to the picture, let us just try to understand and draw our own picture, beta. Now I will draw a flow chart and a diagram. Okay, तो आपको copy के एक side पर you have to draw the diagram. On one side of the copy or register that you are using, draw the diagram there, clean, neat, and on one side, beta, and on one side. Okay, try to draw the flow chart. Try to draw the flow chart. In one flow chart only, I never make you write thesis, guys. It's like I will explain you and all the muscle ligaments. It will be there in the same flow chart. So yes, yeah, let us just start with the ilium osteology. Now, you already know the ilium, okay? Ilium, it is composed of two parts. Okay, it is composed of two parts. It will be a very long flowchart, guys. So I really want you people to be like, yeah, it is composed of two parts. One, it is called as ala of the ilium. Ala का मतलब होता है wings. Okay. Now, yeah, ala, it is a flat bony plate above acetabulum. Above acetabulum. Okay, you please continue in the same flowchart. Even though if I'm using the next slide, it is very important that you continue with the, yeah, the same that part. And the second part, beta, it is called as the body of the ilium. It is second, that is the body, that is the lower part, that is the lower part forming superior 2/5 of acetabulum. चलो अब ये भयानक वाली डेफिनेशन लिख दी है, भयानक वाली डेफिनेशन लिख दी है. let us just try to see these two parts. Okay, I will be trying to draw the lateral and the medial views. Both views I will draw for ilium. देखो ilium है, if it is like this particular register, बेटा, if it is like this particular register, ilium है, सॉरी, इलियम है, तो उसका एक मीडियल पार्ट होगा जो मिड लाइन को फेस करेगा और एक लेटरल पार्ट होगा जो बाहर की तरफ होगा. राइट, तो उसके दोनों सरफेस को डिस्कस करना बहुत जरूरी है. एक तो ये मीडियल वाला जो बॉडी के मिड लाइन के पास है, ओके, और एक बाहर वाला जहां पे एसिटाबुलम प्रेजेंट है एंड इट इज फॉर्मिंग द, या, नोच वाला पार्ट. राइट, हेलो, कौन, चलिए चलिए, वेरी गुड. Sorry, there was an urgent call. Okay, so let us now concentrate over here. Now, beta, just see over here, beta, we have, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, मुझे बाद में कॉल करिएगा. मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, मुझे बाद में कॉल करिएगा. ठीक है, ओके. Continuously disturbing without any reason, I don't know why. Sorry, beta. So remember that we have this iliac crest above, right? We have this iliac crest above. Okay, anterior superior iliac spine, anterior inferior iliac spine. Okay, so yes, so yeah,
will be now. I'm not concerned about the lower part right now. I'm not concerned about the lower part right now. I will just talk about the ilium. Okay. Now, beta, this side. Okay. This side, it is the anterior. Okay. From anterior to posterior. From anterior to posterior. Okay. Now we will label the parts. Okay. We will label the parts. So remember, beta, we have this acetabulum. Okay, below the acetabulum we have one notch, I mean one foramen, that is the obturator foramen. Okay, now beta, when I say when I say ala basically means the body part of the ilium, the body part of the ilium. So I'm talking about, yeah, this part, beta. Okay, this part. Okay, I'm talking about this part. No, just try to make this bit a Y-shaped cartilage. Now this Y-shaped cartilage actually separates. This is the ilium. Okay, this is the ilium, right? This is the pubis, and this is the ischium. This is the ischium. So I'm now concerned with the ilium part. So ilium का ये जो पूरा part है बेटा, this part which I am highlighting right now, okay? This is the ala of the ilium. This is the ala of the ilium. Okay. This is the ala of the ilium. Okay. So yes, this yeah, this is the ala. You can very well see it over here. Yes. Yes. This is the ala part. Yes. And remember, beta. And remember, beta. This is the acetabulum. This is the acetabulum. And acetabulum, the upper 2/5 part, it is referred to as the body of the ilium. Okay, the body, it is the superior 2/5 part of the acetabulum. Okay, it is the superior 2/5 part. So in totality, you have to remember, beta, this is the ala of the ilium, the wings of the ilium, and this is the body of the ilium. So yeah, so if I ask you acetabulum, now this is beta acetabulum. Acetabulum is nothing but, yeah, the 2/5 part of acetabulum, it is formed by. Now if I ask you 2/5 part of the acetabulum, it is formed by, I want answers in the chat box. I want answers in the chat box. 2/5 part of the acetabulum, it is formed by, चलो फटाफट से आंसर बताओ. Yes, it is ilium. Very good, Dimple. Very good, beta. It is the ilium part only. Beta, acetabulum का 2/5 part जो है, okay, that is formed by the ilium. Remember, 2/5 it is formed by ischium, and 1/5 it is formed by pubis. 1/5 it is formed by pubis. Very good. Jainam, Harsh, Kiran, Habiba, Rizkhan, Ash, very good beta, very good. So I hope the ala is clear and the body is clear. फटाफट से एक थम्स अप दे दो अगर ये पार्ट क्लियर हो गया कि ala क्या है और बॉडी क्या है. तो बॉडी कुछ नहीं है, एसिटाबुलम का 2/5 पार्ट है. ठीक है, एसिटाबुलम का सुपीरियर 2/5 पार्ट है. दैट इज एक्चुअली द बॉडी ऑफ द इलियम. दैट इज एक्चुअली द बॉडी ऑफ द इलियम. ठीक है, दैट इज एक्चुअली द बॉडी ऑफ द इलियम. नाउ ala, okay, I'm not coming on to the body part because body is not a point of discussion over here. Now this ala beta, this ala, it is having, remember beta, it is having 4 borders. It is having 4 borders and 3 surfaces. It is having 4 borders and 3 surfaces. It is having 4 borders and
three surfaces. Now remember beta over here, remember over here. Now four borders कौन कौन से हैं बेटा? फोर बॉर्डर्स कौन कौन से? देखो चलो एक बार पहले इसको डायग्राम में देख लेते हैं. नाउ बेटा you already know this is the lateral view, this is the lateral view and this is anterior side. ये anterior side है और ये posterior side है. This is the anterior side and this is the posterior side. If you just see this image बेटा, ये आगे की तरफ है, ये एंटीरियर साइड हो गया, ये तो सबको पता ही है ना. यही यही हम लोग अभी एला ही डिस्कस कर रहे हैं बेटा, अभी हम लोग एला डिस्कस कर रहे हैं. तो एला में वी हैव या चलो इसको इसमें थोड़ा समझा दो तो थोड़ा तुम लोग का दिमाग बिल्कुल खुल जाए. तो बॉडी का ये आगे वाला हिस्सा है तो ये एंटीरियर हो गया और ये पीछे वाला हिस्सा है तो पोस्टीरियर हो गया. और ये कौन सा व्यू है? लेटरल साइड है, लेटरल साइड है. खैर बॉर्डर से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेटरल व्यू है, ठीक है, लेटरल व्यू है. नाउ anterior border begins over here. This is called as anterior, आगे की तरफ है. superior, ऊपर की तरफ है. किसका पार्ट है? ilium का पार्ट है. anterior superior iliac spine. ये देखो spine like projection है, spine like projection है, इस तरीके का projection है, ठीक है. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? anterior superior iliac spine. ओके, एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन. अभी मैं एंटीरियर बॉर्डर की बात कर रहा हूं तो एंटीरियर बॉर्डर विल बी इन फ्रंट ओनली. और एंटीरियर बॉर्डर स्टार्ट फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर. देखो आगे की तरफ है, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है ना. एंटीरियर सुपीरियर और किस बोन का पार्ट है? इलियम बोन का, तो इलियाक स्पाइन हो जाएगा. और स्पाइन लाइक प्रोजेक्शन है, स्पाइन लाइक प्रोजेक्शन है. अब यहां से ये बॉर्डर शुरू होता है. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड इट इज कमिंग डाउन टू अनदर बॉर्डर. और इसको हम लोग बोलेंगे आगे की तरफ ये एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यू आर वेरी वेल अवेयर, वी हैव एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, right? It starts from anterior superior iliac spine, right? It forms a notch, that is a notch is formed over here, okay. Then it comes to anterior inferior iliac spine and then this border will end at acetabulum, and then this border will end at acetabulum. So I hope everyone can appreciate the anterior border of the ilium. I hope everyone can appreciate the anterior border of the ilium. चलो आंसर बताओ. यस डिम्पल, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे. तो यस, दिस इज द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन. ओके, दिस इज एंटीरियर inferior iliac spine and this is the border which is starting from anterior superior iliac spine. ओके, फॉर्मिंग अ नॉच, नॉच बना रहा है एक, देखो कर्व लाइक कवरिंग देखने को मिल रही है. इट इज नॉच anterior inferior iliac spine and it is ending at the level of acetabulum. Okay, it is ending at the level of acetabulum. So this is the anterior border. So the first border beta, the first border that you have to remember, it is the anterior border. Anterior border, remember beta, it begins at anterior superior iliac spine. Okay, it forms a notch, it forms a notch, then it will, there will be anterior inferior, inferior मतलब नीचे की तरफ हो गया, आगे की तरफ ये iliac spine and then it will end below acetabulum, ends below acetabulum, acetabulum ends below acetabulum. एंटीरियर बॉर्डर क्लियर है सब लोगों को? आई होप द एंटीरियर बॉर्डर इज क्लियर. तो यहाँ पे आप लोगों को रखना है कि देयर आर टू मसल्स, ओके, which is attached to the anterior superior iliac spine. Okay, okay, there is one muscle which is attached to anterior superior iliac spine. बेटा जो पढ़ाऊंगा उसके साथ ही याद रखिएगा, there is origin of one muscle over here and this muscle it is called as the sartorius muscle. This is called as the sartorius muscle.
Now, sartorius muscle, it is also called as the honeymoon muscle. अब इसको हनीमून मसल क्यों बोलते हैं ये तुम लोग मुझे कल पता करके बताना. मतलब अभी लाइव सेशन से तो मैं ये सब बातें नहीं करूंगा यहाँ पे. इट डजंट लुक गुड. हनीमून मसल बोलते हैं इसको, टेलर्स मसल भी बोलते हैं. ठीक है, मसल्स का भी अलग से टॉपिक लेंगे. अभी मैं बोन के साथ आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू. ओके, अभी आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू विद द बोन. ओके, कि बोन में किस किस पार्ट पे प्रेजेंट है. जब मैं अलग से मसल्स कराऊंगा तो यू विल बी लाइक वेरी मच क्लियर. इट इज आल्सो कॉल्ड एज द हनीमून मसल और टेलर्स मसल. नहीं भी लिखोगे तो चलेगा. ठीक है, apart from that beta, you will also find one ligament over here. Okay, on anterior superior iliac spine a ligament will be there, and this ligament beta, it is called as the inguinal ligament, and it is the lateral end of inguinal ligament. मैंने बताया था ना, इंग्वाइनल लिगामेंट स्टार्ट होती है, कहां से स्टार्ट होती है? दैट इज द एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन और प्यूबिक सिम्फाइसिस तक जाता है. Okay, it is the lateral end of the inguinal ligament. I have already told you it starts from the anterior superior iliac spine. तो anterior superior iliac spine पर दो चीजें देखने को मिलती हैं. Anterior superior iliac spine पर you will find two things. Okay, you will find two things. We have sartorius muscle and inguinal ligament. Inguinal ligament. इसी point से बेटा the two things are originating. The two things are originating. क्या ये क्लियर है सब लोगों को? फटाफट से एक थम्स अप दे दो बेटा कि ये चीज पता चली हम लोग को. चल, नाउ बेटा रिमेंबर एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन. एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन, यहां पर भी एक मसल प्रेजेंट होता है. आई विल यूज रेड कलर. ओके, आई विल यूज रेड कलर. ओके, यहां पे भी एक मसल प्रेजेंट होता है. ओके, एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन से एक मसल ओरिजिनेट होती है, एंड इट इज, यस, द rectus femoris muscle. Straight head of the rectus femoris muscle. rectus का मतलब ही क्या होता है? स्ट्रेट. rectus femoris muscle. rectus femoris muscle. और यहीं पर एक लिगामेंट और देखने को मिलता है बेटा, that you have to like be very clear. And this ligament बेटा, it is the iliofemoral ligament. It is the iliofemoral ligament which you will see over here. It is the iliofemoral ligament. It is the iliofemoral ligament. I hope this is clear to each one of you. I hope this is clear to each one of you. चलो फटाफट से एक थम्स अप दे दो कि ये चीज क्लियर हो गई. अगर मैं तुमको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूं बेटा, तो एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन. ओके, एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन पर यू विल हैव, या यू जस्ट वांट टू सी, if you just want to see बेटा over here कि एंटीरियर, देखो ये स्पाइन लाइक प्रोजेक्शन है ना, ये स्पाइन लाइक प्रोजेक्शन है. एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन हो गया, ये एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन हो गया, और ये बीच में एक नोच बना रहा है, और ये नीचे जाके कहाँ एंड हो रहा है? एसिटाबुलम पे. तो एंटीरियर इंफीरियर पे एक मसल देखने को मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज द रेक्टस फेमोरिस. ऊपर कौन सी मसल देखने को मिलेगी? सार्टोरियस. ऊपर लिगामेंट कौन सा होगा? इंग्वाइनल. और नीचे लिगामेंट कौन सा होगा? दैट इज द इलियोफेमोरल लिगामेंट. इलियोफेमोरल लिगामेंट. I hope this border is clear. This border along with the attachments is clear. This border along with the attachments is clear to everyone. क्लियर है सब लोगों को? चलो एक थम्स अप दे दो फटाफट से. सो टाइम. चलो जयनाम, वेरी गुड बेटा. नाउ कमिंग ऑन टू द अदर मसल बेटा, कमिंग ऑन टू द अदर मसल. Just a moment guys. चलो वेरी गुड. नाउ कमिंग ऑन टू दिस बॉर्डर बेटा. ओके, आई एम हाईलाइटिंग दिस बॉर्डर बेटा. यू आर गोइंग टू टेल मी इसका नाम क्या होगा.
You are going to tell me इसका नाम क्या होगा? Which border will be this? General anatomy के according to general anatomy, which border will be this बेटा? It is, चलो आंसर बताओ फटाफट से, which border it will be? Yes, it will be which border बेटा? हाँ बताओ. यस बेटा, इट इज ऊपर की तरफ है ना बेटा, ये ऊपर की तरफ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सुपीरियर बॉर्डर. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सुपीरियर बॉर्डर. यस बेटा, ऊपर की साइड है ना, ऊपर की साइड है, ऑब्वियसली बात है. यहाँ पे देखो, इस पिक्चर में भी देख सकते हो बेटा, ये वाला जो बॉर्डर है, अगर आप देखोगे ये वाला बॉर्डर ऊपर की तरफ है, तो ये सुपीरियर बॉर्डर हो गया. और अगर लेटरल व्यू में देखने की कोशिश करोगे बेटा, तो यू कैन ऑल्सो सी कि ये वाला जो बॉर्डर है, ठीक है, ये वाला बॉर्डर, ये क्या है? सुपीरियर बॉर्डर. सुपीरियर बॉर्डर, ठीक है, दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर. यस, एवरीवन इज राइट. हर्ष किरण, तो ये सुपीरियर बॉर्डर हो गया. अब सुपीरियर बॉर्डर यू विल, और सुपीरियर बॉर्डर को हम लोग बोलते हैं इलियाक क्रेस्ट. सुपीरियर बॉर्डर को बोलते हैं इलियाक क्रेस्ट. सुपीरियर बॉर्डर को बोला जाता है इलियाक क्रेस्ट. बेटा यू विल कंटिन्यू इन द सेम फ्लो चार्ट. आई डोंट हैव स्पेस ओवर देयर, क्योंकि मैं लिखूंगा तो अगेन इट विल हाइड बिहाइंड मी. The screen is like that only, so I will continue the superior border over here. So yeah, so we were discussing about the superior border. Now this superior border, it is again divided into two parts. Okay, it is again divided into two parts. We have the ventral segment. Ventral का मतलब होता है बेटा anterior. Ventral का मतलब होता है anterior. Okay, and we have the dorsal segment. Okay, that is the posterior part. Okay, so we have the ventral segment and we have the dorsal segment. Ventral segment and the dorsal segment. Now beta, you are very well aware the ventral segment. Okay, what I have done is, okay, let me just draw this for you. Let me just draw this border for you. So yeah, so this is the border. This is the superior border and ये हिस्सा है anterior. एंटीरियर है और ये हिस्सा है पोस्टीरियर. पोस्टीरियर, आगे से पीछे. व्हाट आई हैव डन बेटा, आई हैव नथिंग डन. ये वाला जो बॉर्डर है ना, दिस बॉर्डर बेटा, आई हैव लाइक कट इट. इसको मैंने काट के, आपको पता है ये एंटीरियर हिस्सा है और ये क्या है? पोस्टीरियर. तो इसको जस्ट कट करके मैंने इधर पेस्ट कर दिया. आई हैव जस्ट cut it and I have just pasted over here. Usman, beta, if it's a long lecture, then what I should do? I have to teach everything from the basics, and yes, it will take time. And if after 1 hours only 30 minutes, if you are like getting so much back pain and all, just I would say, तो फिर तो 12 hours की पढ़ाई होती है मेडिकल में यार. तुमसे 1.5 घंटा नहीं बैठा जा रहा है, तो I can like it's, even if I am sitting for so long, so I to actually believe that you should be like you have more energy than me, right? You are the young people over there, so you should sit more. You have no capacity of sitting for long hours. एड्रीनलिन रश ना हो जाए तब तक बैठने की कोशिश करो बॉडी, जब तक बिल्कुल बॉडी जवाब ना दे दे. पढ़ना तो है ही, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, मतलब इसके लिए तो आई कैन नॉट, वो नहीं कर सकते ना हम लोग. मेरा सब कुछ सीखना है तो ऐसे कोई भी नहीं बताएगा. इवन इफ यू गो विद द एप्स आल्सो, दे विल नॉट टीच द बोन्स. They will directly start with the nerve supply and all. I can also start with the nerve supply and I will just complete the lower limb in 2 hours. But then again, you will understand nothing out of that. My process is like, even if I'm dealing it with it, it's like I'm just starting it with bones, then I will do muscles, then nerves, then arteries, veins, and like I do this way beta. पहले bones कराओ, bones के साथ ही उसकी muscles और ligaments बता दो. So it's like easy for your what I say, your class also, right? So we have the ventral segment and the dorsal segment beta. So remember,
the ventral segment, okay, the ventral segment, it is 2/3. Yes, the ventral, it is 2/3. Ventral को anterior भी बोलते हैं बेटा. Ventral, it is also called anterior. And we have the dorsal part, right? The dorsal segment, it is 1/3. 1/3. The dorsal part, it is 1/3, right? Ventral, we have 2/3. Dorsal, it is 1/3. Dorsal, it is 1/3. Hello. Now students listen over here. Now students listen over here. Yeah. Now just see over here, beta. This is the iliac crest. If you can see over here, very beautifully it is shown. This is the iliac crest or the superior border. Superior border को हम लोग क्या बोलते हैं? Iliac crest बोलते हैं. This is the superior border or the iliac crest, right? So you can see it over here as well, right? So this is the superior border or the iliac crest. Now this superior border or the iliac crest, okay, ये anterior part है. So we have ventral 2/3 or dorsal 1/3. Okay, ventral 2/3 और dorsal 1/3. तो कहने का मतलब है ये जो border है, इस border ventrally 2/3 and dorsal कितना हो जाएगा? 1/3. It is divided. Okay, it is divided into anterior 2/3 and ventral, I mean posterior or dorsal 1/3. Okay, now why it is divided ventral 2/3 and dorsal 1/3? Why not ventral 1/3 and dorsal 2/3? It is, remember, because beta, if this is the midline of the body, okay, if this is the midline of the body, so remember the ventral surface, it is forming a concave structure, beta. It is concave medially. It is concave medially. And dorsal, it is, yes, convex lateral. It is convex laterally. It is convex, cave like structure बना रहा है ना, cave like structure lateral, right? So yes, the ventral part, ventral 2/3 beta, the ventral 2/3, okay, from, yeah, from outer to inner, बाहर से अंदर की तरफ देखें बेटा, so the ventral 2/3 will contain one muscle over here, okay, one muscle over here, okay. This muscle, it is called as, yeah, external oblique muscle, EOM, external oblique muscle. Inner to the external oblique muscle, inner to the external oblique muscle, we have another muscle, okay, we have another muscle, okay, that is called as the internal oblique muscle. And yeah, below it, we have another muscle, and that is transverse abdominis muscle. Now if you want, I will just try to show this better. Now this, yeah, this ventral segment beta, if I'm just taking this ventral segment, this ventral segment is having two lips, okay, this is having two lips. It is having outer lip and it is having, yeah, it is having inner lip, and in between beta, in between it has intermediate rough area, intermediate rough area. So we have outer lip, we have inner lip, okay, and in between we have intermediate rough area, okay. And on the outer lip beta, so if we talk about the ventral segment beta, so it has, yes, outer lip, intermediate rough area, and we have the inner lip, we have the inner lip. So yes, outer lip, it is, yes, it is having one origin of muscle beta. It is called as external
abdominal oblique muscle. ये मैंने abdomen में भी पढ़ाया था. You should remember it is external abdominal oblique muscle. Okay, external abdominal oblique muscle. Intermediate rough area will have internal abdominal oblique muscle and inner lip will have transverse abdominis muscle. ये abdomen की muscles होती है which are originating from this iliac crest. Okay, these are the muscles which are originating from the iliac crest. So external oblique abdominal oblique muscle, internal abdominal oblique muscle, and transverse abdominis muscle. If you want, I will just try to show you better. If you want, I will just try to show you in this picture also. Just try to see better. Just try to see. You already know beta, this is the iliac crest. Okay, this is the iliac crest which you can see. ये क्या है? iliac crest है. iliac crest. अब ये वाली लिप बताओ, A कौन सी लिप होगी, B कौन सी लिप होगी, और ये C क्या होगा? A क्या होगा, B क्या होगा और C क्या होगा? जल्दी बताओ. और यहीं से तीनों मसल्स का ऑरिजिन तुम्हें क्लियर हो जाएगा. यस, ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा? यस, ए इज द आउटर लिप, बाहर की तरफ है ना, लेटरल साइड पे है, तो आउटर लिप हो गया, आउटर लिप. बी इनर लिप हो जाएगा, इनर लिप हो जाएगा. और सी क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट. यस यस, वेरी गुड उस्मान, डिंपल, किरण, गरिमा, वेरी गुड बेटा. आउटर, इनर एंड यस इंटरमीडिएट रफ एरिया दैट यू हैव ऑलरेडी डन. अब हम पोस्टीरियर पार्ट की बात करें, ठीक है, पीछे वाली पार्ट की बात करें. अब पीछे वाली की बात करता हूं मैं, पीछे वाले की बात करता हूं. तो ये इसी में आप लोगों को एक चीज और याद रखनी है, ठीक है, इसी में एक चीज और याद रखनी है. या इसी वेंट्रल टू थर्ड में, इसी वेंट्रल टू थर्ड में, यस, वी हैव मोर मसल्स ओवर हियर. We have two more muscles beta, we have two more muscles. Yes, outer side पर present होगी latissimus dorsi muscle, latissimus dorsi muscle. और inner side पे present होती है, yes, inner side पे present होगी quadratus lumborum muscle, quadratus lumborum muscle. Yes, so remember beta, if I'm talking about एक्सटर्नल एब्डोमिनल ऑब्लिक मसल, ये तो एंटीरियर हाफ में प्रेजेंट है, ठीक है. अगर मैं पोस्टीरियर हाफ की बात करूं, आउटर लिप पे ही, तो वी हैव द लैटिसिमस डॉर्साई मसल, लैटिसिमस डॉर्साई मसल, ओके, लैटिसिमस डॉर्साई मसल, राइट. यस, एवरीवन इज राइट, एवरीवन इज राइट. और अगर मैं इनर लिप पे बात करूं, ओके, इनर लिप पे एंटीरियर हाफ में आगे की तरफ वी हैव द ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, ओके, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल. एंड पोस्टीरियर साइड पे बात करूं, तो पोस्टीरियर या पोस्टीरियर हाफ में प्रेजेंट होगी क्वाड्रेटस लुम्बोरम मसल, क्वाड्रेटस लुम्बोरम मसल, quadratus lumborum muscle, right? So yes, quadratus lumborum muscle. Now coming on to the dorsal segment, guys, coming on to the dorsal segment. The dorsal segment, it is composed of outer, inner and बीच में एक लाइन होती है, that is called as ridge. Ridge को मतलब क्या होता है? लाइन. So just you have to remember the three segments, okay, in the posterior part also. We have the outer slope, okay, ridge is just a line बोलते हैं anatomy में, we call it ridge. And then we have the inner slope, we have the outer slope, ridge and the inner slope. We have the outer slope, ridge and the inner slope. Yes, the outer slope beta, the outer slope, okay, the outer slope, basically a muscle is present on the outer slope, and that is called as
a muscle is originating, and that is called as gluteus maximus muscle. It is called as gluteus maximus muscle. So remember, on the outer slope, we have the gluteus maximus muscle. Okay. Then we have a ridge, and on the inner slope beta, we have sacrospinalis muscle. Sacrospinalis muscle. Okay. And on the inner slope, we have the sacrospinalis muscle. Sacrospinalis muscle. Yeah. So remember बेटा आगे से पीछे की तरफ अगर हम जाए, if you just want to see over here, okay, in this section I will try to make it easy for you people. Yeah, in this section I will try to make it easy for you people. You are already aware बेटा कि yeah, we have this outer lip. Outer lip से कौन सी मसल originate करेगी? Yes, we have the latissimus dorsi मसल. ओके, फिर इनर लिप होगी और फिर उसकी तरफ क्या होगी? या इंटरमीडिएट एरिया होगा, फिर इनर लिप होगी, लेटिसिमस डॉर्साई मसल. बीच में क्या आ जाएगा? यू ऑलरेडी नो, वी हैव या इंटरनल ऑब्लिक मसल और फिर ट्रांसवर्स एब्डोमिनस. पीछे की तरफ आउटर साइड पे, पीछे की तरफ आउटर साइड पे यू आर वेरी मच अवेयर. यस, ओके, सॉरी, ये तो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है. फिर वी हैव द लेटिसिमस डॉर्साई मसल. या लेटिसिमस डॉर्साई, देखो, ventrally two third, external oblique, internal oblique, transverse abdominis, outer to outer, intermediate और inner. outer lip पर external oblique, बीच में internal oblique और बिल्कुल inner side पे transverse abdominis, right? Now over here we have the latissimus dorsi muscle और उस साइड inner lip पे क्या होगा? quadratus lumborum, quadratus lumborum muscle. posterior side पे आ जाओ बेटा. posterior side पे we have gluteus maximus on the outer side और inner side पे sacrospinalis muscle. sacrospinalis muscle. इस तरीके से muscles are originating on this simple border बेटा. देखो, एक जस्ट बॉर्डर की तरह, एक क्रेस्ट की तरह, और देखो यहाँ पे कम से कम आप लोगों ने 3 4 5 7 मसल्स आर लाइक ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस बॉर्डर. इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन बेटा? इज दिस क्लियर? इसी बॉर्डर को उठाकर मैंने आप लोगों को यहां दिखाया है. जस्ट आई ट्राई टू शो ओवर हियर. इज दिस क्लियर टू ईच वन ऑफ यू? यस. आगे से पीछे की तरफ. यस हर्ष, वेरी गुड. ऐश, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड. चलो, यस यस यस. चलो, सुपीरियर बॉर्डर हो गया. 4 बॉर्डर से 2 बॉर्डर डिस्कस कर लिए. तीसरा बॉर्डर थोड़ा इजी है एज कंपेयर टू दिस. तीसरा बॉर्डर देखो, एंटीरियर बॉर्डर हो गया. एंटीरियर बॉर्डर हमने लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है. सुपीरियर बॉर्डर हम लोगों का हो गया, ये वाला पार्ट हो गया. नाउ वी कम टू, या नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द पोस्टीरियर बॉर्डर. द पोस्टीरियर बॉर्डर बेटा, द पोस्टीरियर बॉर्डर. Let me just add one more slide. Yes, let me just add one more slide. Sure. Let us discuss about the posterior border beta. You are already aware. Yeah. Posterior border. Yes, Katika Ghosh, you are right. Yeah. When I say sacrospinalis, yeah, it's just the same one. Right. So yes, coming on to the posterior border beta, you already know. So yes.
So remember guys, you are already aware of this part, like we have drawn it multiple number of times, right? So I'm just concerned about the posterior border as of now. Right? So remember beta, posterior border, basically it will start where the iliac crest will end, okay? Where the iliac crest will end, okay? So yes, this is something which is called as the posterior, yeah, it is the posterior superior iliac spine, okay? It is the posterior superior iliac spine. If you just want, I will just show it in the picture as well. Yes, if you can see over here beta, if you can see over here, where the iliac crest is ending, it is the posterior superior iliac spine. Okay, it is the posterior superior iliac spine. Then it will form the posterior inferior iliac spine, right? And yes, this is a notch. It is forming a notch also, and that is called as the greater sciatic notch. That is called as the greater sciatic notch. So remember the upper border of the greater sciatic notch. So remember beta, which I have drawn over here. It is the posterior superior iliac spine. पीछे की तरफ है ना बेटा, पीछे की तरफ आ जाओ. posterior superior ऊपर की तरफ है. किस बोन का पार्ट है? iliac बोन का, iliac spine. Then we have posterior inferior iliac spine. Okay, and we have a notch which is forming over here, a notch which is forming over here, and this notch, it is called as the greater sciatic notch. It is called as the greater sciatic notch. Greater sciatic notch. So remember beta, if we talk about the posterior border, so it begins at, okay, it begins at PSIS, posterior superior iliac spine, okay. Then it forms posterior inferior iliac spine, then ends by forming upper border of greater sciatic notch. ग्रेटर शियाटिक नॉच. और इसमें कोई भी अटैचमेंट नहीं है एज सच, तो अभी इसको बिल्कुल हम लोग खाली छोड़ सकते हैं बिकॉज देयर इज नो अटैचमेंट ओवर हियर. So if you want to see, you can just see over here. Okay, so you can see beta over here, ये है posterior superior iliac spine. So this is continuing, this starting from posterior superior iliac spine, it is forming posterior inferior iliac spine. Then it is forming the upper border of this notch. This notch, it is the greater sciatic notch. It is the greater sciatic notch. It is the greater sciatic notch. Lower border of greater sciatic notch, it is formed by which bone? Now I want the answers in the chat box. Lower border of the greater sciatic notch, it is formed by which bone? The lower border of the greater sciatic notch. Yes, ischium, Kriti, very good. Dimple D, very good, beta. It is the ischium. Yes, it is the ischium, beta. It is forming the lower border of the greater sciatic notch. Yes, Garima, Ash, Kiran, Harsh, very good, beta. It is the lower border, okay, of the greater sciatic notch. Yeah, it is formed by the ischium, okay. So yes, that was about the posterior border. Coming on to the medial border, beta. Coming on to the medial border. Now, can I see? Okay, everyone knows this is the superior border. This is the anterior border. Okay, this is the posterior border. Why can I see me? Why can't I see the medial border in this? Why I cannot see medial border in this? I want the answer. Let me know. Just apply your common sense and let me know why I cannot see the medial border in this. What's the reason? Yes, Priti, it is present medially. बेटा ये कौन सा सरफेस दिखा रहा हूं? ये तो लेटरल सरफेस देख रहे हो ना.
ये तो लेटरल सरफेस है ना, तो यहाँ पे मीडियल बॉर्डर कैसे दिखेगा? जस्ट एज्यूमिंग बेटा, अब ये वाली पिक्चर देखो, ये तो लेटरल साइड हो गई ना, तो यहाँ मीडियल बॉर्डर कैसे दिखेगा? यहाँ एंटीरियर दिख सकता है तुम्हें, ठीक है, यहाँ तुम्हें सुपीरियर बॉर्डर दिख सकता है, यहाँ तुम्हें पोस्टीरियर बॉर्डर दिख सकता है, ठीक है, ये ग्रेटर शियाटिक नॉच है, ठीक है, बट यहाँ पे तुम्हें मीडियल बॉर्डर नहीं दिखेगा। यस, बिकॉज इट इज द लेटरल साइड, ये बाहर की तरफ है ना। मीडियल बॉर्डर कहाँ प्रेजेंट होगा बेटा? अंदर की तरफ। मीडियल बॉर्डर कहाँ प्रेजेंट होगा? अंदर की तरफ। अच्छा, अब ये है मीडियल साइड बेटा, ये है मीडियल साइड, ओके। सो यू आर ऑलरेडी अवेयर, यस बेटा, देखो ये एंटीरियर है, ओके, एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स पोस्टीरियर, और ये आ गया अब मीडियल व्यू, ये आ गया मीडियल व्यू। यू ऑलरेडी नो ये एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, ओके, एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन, ओके। सो दिस बॉर्डर, ओके, ये कौन सा बॉर्डर है बेटा? फटाफट से इसका आंसर दो चैट बॉक्स में। विच बॉर्डर इज दिस विच आई हैव जस्ट मार्क्ड? विच बॉर्डर इज दिस जस्ट विच आई हैव मार्क्ड बेटा? चलो, ये मीडियल लेटरल सब जगह सेम ही रहेगा। ये बताओ ये बॉर्डर कौन सा है? जस्ट टेल मी विच बॉर्डर इज दिस? सुपीरियर, वेरी गुड उस्मान, वेरी गुड वेरी गुड, इट इज द सुपीरियर बॉर्डर बेटा। ये तो सुपीरियर बॉर्डर ही होगा। यस यस, वेरी गुड बेटा, इट इज द सुपीरियर बॉर्डर। उस्मान, कृति, डिम्पल, ऐश, यस, हाँ हाँ हाँ। चल, अब ये सुपीरियर बॉर्डर है, तो इसी को इलिया क्रेस्ट भी बोलते हैं, इसी को इलिया क्रेस्ट भी बोला जाता है। सो रिमेंबर बेटा, मीडियल बॉर्डर, okay, medial border begins near the iliac crest, okay, this is the medial border, it is beginning near the iliac crest and it is going down like this is the medial border beta, it is going down and like merging with the pubis bone, okay. So yes, it is the iliopubic eminence, iliopubic eminence, okay, iliopubic eminence. So remember beta, when I say medial border, it begins near iliac crest, okay, it begins near iliac crest, okay, then forms an arcuate line, okay, it forms an arc like line like this, okay, forms arcuate line and it extends to the iliopubic eminence, iliopubic eminence. Okay, it extends to the iliopubic eminence over here, iliopubic eminence. So yes, it extends to the iliopubic eminence, right? Iliopubic eminence का मतलब है जहाँ पे ilium और pubis basically they are joining together with the help of a cartilage, okay, where the ilium continues to the pubis bone, okay. So yes, that is the, yeah, that is something that you have to remember. So yes, that is about the medial border. I hope all the four borders are clear beta, I hope all the four borders are clear. So if you just want to mark, it is anterior superior iliac spine, okay, we have the anterior inferior iliac spine, okay, and this is the anterior border, okay, this is posterior superior iliac spine, posterior inferior iliac spine, this is the greater sciatic notch. So it is the posterior border beta, it is the posterior border, and this above one, it is the superior border, also called as the iliac crest, iliac crest, right? So I hope all the three borders are clear to each one of you. I hope all the three border or four borders और medial border वाला ये वाला picture हो गया, right? All the four borders are clear to each one of you. Dimple, Kiran, Kriti, Harsh, very good, beta.
जब तक एड्रेनलिन रश ना हो जाए बॉडी में तब तक बैठे रहो, तब तक बैठे रहो। लेट योर लगने भी चाहिए ना डॉक्टर से, बेटा ज्यादा पढ़ाई नहीं करो तो फिर डॉक्टर्स किस बात के रह गए, ज्यादा पढ़ाई नहीं करोगे तो डॉक्टर्स किस बात के रह जाओगे, ठीक है। तो यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, ये क्लियर हो गया आई होप सबको, ठीक है, ये क्लियर हो गया सब लोगों को। Now we have discussed the borders. Now coming on to the surfaces. Okay, one thing I can do is ki I will only teach ilium today. Okay, let me complete the surfaces, and yes, let me complete the surfaces. Yeah, yeah. So let me complete the ilium part at least today. Okay, so yes, we have three surfaces, beta. We have three surfaces. So we are talking about ilium bone, and ilium bone has three surfaces. If you have space, please draw it in the same flowchart. If you have space, please draw it in the same flowchart. The three surfaces beta. Okay, the three surfaces beta. Okay, we have the gluteal surface, gluteal surface. We have iliac fossa. We have the iliac fossa, and we have the sacropelvic surface. Sacropelvic surface. Now we will try to see these surface beta. We will try to see these surfaces. If I have this bone, I don't have much. Chalo. Let us draw beta first. Let us just try to draw it. Okay. So you already know we have anterior superior iliac spine. Okay. We have anterior inferior iliac spine. Okay. It forms a notch, and yes, it is like ending over here like this. And we have the posterior superior iliac spine, posterior inferior iliac spine continues as the greater sciatic notch, okay, and automatically it is forming the ischium part. Yes, so it is somewhat like this, right? Now you already know we have this, yeah, obturator foramen, and we have this acetabulum. We have this acetabulum, right? We have this acetabulum. Now you are already aware, beta, that there are three lines. Now this is the anterior, this is the posterior, and this is the lateral view. This is the lateral view. Now, beta, you will see three lines over here. Okay, there will be three lines which will be present on the lateral surface. Okay, and these lines are posterior gluteal line. Okay, posterior gluteal line. We have anterior gluteal line. Yes, and we have inferior gluteal line. So these three lines basically divide this gluteal surface or the lateral surface into four regions. Okay, into four regions. So remember we have one, two, three, and four parts. One, two, three, and four parts. One, two, three, and four parts. Remember we have the, yeah, posterior gluteal line. Okay, we have the anterior gluteal line. Some books it is written middle also, and we have the inferior gluteal line. Inferior gluteal line. The gluteal surface or the lateral part beta. The lateral surface, I would say, it is divided in, okay, it is divided in four parts by three lines. It is divided in four parts by three lines. If you want to see beta, you can see it over here also. Okay, you can just see it over here also. So yes, okay, I cannot delete that. Yeah.
You can see this line beta over here. That is the posterior gluteal line. It is beginning from the iliac crest. Okay, it is beginning from the iliac crest and it is ending on the sciatic notch over here. Okay, you can see this line beta. This line, it is the anterior gluteal line. Okay, and this line beta, which you can see over here, it is the inferior gluteal line. This is the inferior gluteal line. So this surface, it is divided into four parts. Okay, we have four parts, 1, 2, 3 and 4, by these three lines. Okay, so yes, I hope this is clear. So yeah, over here, okay. So remember in the first part beta, okay, in the first part, that is behind posterior gluteal line, basically a muscle is originating, and that is gluteus. Okay, let me, yeah, write it with red. It is the gluteus maximus muscle. It is the gluteus maximus muscle. Okay, behind the posterior gluteal line means over here. Gluteus maximus. Okay, if you will ask me, okay, in the middle we have gluteus medius muscle. Okay, yeah, between the posterior and the anterior line we have the gluteus medius muscle, and between the anterior and the inferior line we have this muscle, and that is called as the gluteus minimus muscle. Gluteus minimus muscle. They all are originating from here. So yes, the second one, if you want to write or complete in the flow chart, between, yeah, yeah, between the posterior and anterior gluteal line, we have gluteus medius muscle, and between anterior and, yeah, inferior gluteal line, we have gluteus minimus muscle. We have gluteus minimus muscle. क्या ये क्लियर है सब लोगों को? Is this part clear to each one of you? मेरा एक थम्स अप दे दो फटाफट से चैट बॉक्स में अगर ये समझ में आ गया है कि ग्लूटियल सरफेस क्या कैसा है. किरण, यस इट्स क्लियर. तो इफ यू जस्ट वांट टू सी बेटा कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है, ठीक है, ये एंटीरियर ग्लूटियल लाइन हो जाएगी, और एक नीचे की तरफ होता है दैट इज द इंफीरियर ग्लूटियल लाइन. तो यस, इस तरीके से होगा ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस, ओके, एंड ग्लूटियस मिनिमस. इस तरीके से मसल्स है, राइट? सो यस, आई होप एवरीवन इज लाइक लिसनिंग. या, ओके, perfect बेटा. So I don't have time to reply to each and every comment, but yeah, over the head of the acetabulum beta, yeah, there is a groove which is present, and over here a muscle is originating over the head below the inferior gluteal line, and this is called as rectus femoris muscle. It is reflected head of the rectus femoris muscle that arises from a groove above the acetabulum. Right? Now coming on to the iliac fossa, बेटा ये फटाफट से दो और पढ़ लेते हैं. iliac fossa, बेटा ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, अब आ जाओ मिडिल वाले पार्ट पे. तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है which is not forming the joint, it is called as the iliac fossa. इसको iliac fossa बोलते हैं बेटा, ये
ये मीडियल व्यू दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, मीडियल व्यू है ये, ओके, विच इज फेसिंग टुवर्ड्स द मिड लाइन, विच इज फेसिंग टुवर्ड्स द मिड लाइन। तो ये इलियक फोसा है, इसको हम लोग फॉल्स पेल्विस भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स पेल्विस भी बोला जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फॉल्स पेल्विस। और तीसरा आता है sacropelvis, sacropelvis. So you are very well aware if I'm talking about sacropelvis. Okay, let me just use another picture. Yeah, this is the देखो ये हो गया iliac fossa वाला पार्ट, ठीक है, iliac fossa। अब जो दोनों सरफेस है वो मिड लाइन मिडिल साइड पे प्रेजेंट है, और ये वाला दोनों जॉइंट बनाते हैं बेटा, ये वाला दोनों जॉइंट बनाते हैं, ठीक है। यस, वी हैव दिस iliac tuberosity, iliac tuberosity, yeah, we have this iliac tuberosity, auricular surface, auricular surface, और ये नीचे वाला थोड़ा सा जो हो जाता है इसको बोलते हैं pelvic surface, pelvic surface, pelvic surface। और इन्हीं तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं sacropelvic surface, sacropelvic surface। pelvic surface वो surface which is facing towards the pelvis, pelvic surface is that surface which is facing towards the pelvis, which is facing towards the pelvis। We have the iliac tuberosity, okay, we have the auricular surface and we have the pelvic surface, we have the pelvic surface। So remember beta ki, okay, remember beta iliac fossa, okay, basically over here there is a presence of a muscle that is called as the iliacus muscle, okay, a muscle originates that is called as the iliacus muscle, that is something which you have to know। And iliac fossa, it is a false pelvis, it is not taking participation in the joint, okay, it is a part of the pelvis but it is not forming the joint, okay। When we talk to sacropelvic surface, sacropelvic is divided into three parts, okay, sacropelvic, it is divided into three parts। We have the iliac tuberosity, iliac tuberosity, we have the auricular surface, auricular surface, and yes, we have the pelvic surface also, pelvic surface। iliac tuberosity, बेटा tuberosity का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, tuberosity का मतलब पहले भी बताया था, इट इज अ रफ एरिया, ओके, देखो रफ एरिया होता है और थोड़ा सा राउंडेड होता है प्रोजेक्शन में, एंड इट इज जस्ट बिलो द iliac crest, इट इज जस्ट बिलो द iliac crest। तो ये रफ एरिया है, तो इट विल गिव राइज टू सर्टेन लिगामेंट्स बेटा, इट विल गिव राइज टू सर्टेन लिगामेंट्स, ये रफ इंप्रेशन होता है, ओके, iliac tuberosity। So remember there will be certain ligaments which will be attached over here, yeah, there will be certain ligaments which will be attached over here। So remember, yeah, we have ligaments over here, that is the interosseous sacroiliac ligament, sacroiliac ligament। Now when I say sacroiliac ligament beta, it is between the sacrum and the iliac bone, okay, the ilium bone, interosseous, inter का मतलब होता है in between, osseous means bone, okay, osseous means bones, it is in between the two bones, that is the sacrum and the ilium। So we have the interosseous interosseous sacroiliac ligament, okay, and also it contains dorsal sacroiliac ligament, okay, पीछे की साइड पे होता है, so just one is enough, okay। If we talk about the auricular surface, okay, this auricular surface, it lies in front of, yeah, iliac tuberosity, iliac tuberosity, and remember it lies in front of the iliac tuberosity and it forms a joint beta that is called as the sacroiliac joint, that is called as the sacroiliac joint, that is called as the sacroiliac joint। तो ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये जो आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये सेक्रम बोन है और ये इलियम बोन है। तो ये सेक्रम और इलियम के बीच में जॉइंट बना रहा है और ये वाला पार्ट कुछ इस तरीके से, इफ यू कैन जस्ट सी इट ओवर हियर, यस, ये कान के ऑरिकल जैसा लगता है बेटा, इट इज जस्ट लुकिंग लाइक द ऑरिकल ऑफ द ईयर, ओके, दैट्स व्हाई इसको हम लोग बोलते हैं ऑरिकुलर पार्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ऑरिकुलर पार्ट। So yes, it is forming
It lies in the iliac tuberosity. Yeah. So yes, pelvic surface beta, remember over here, yeah, the pelvic surface, one muscle is attached, that is obturator internus muscle. Okay, obturator internus muscle. In the pelvic part beta, in the pelvic part, remember this part I'm talking about, one muscle is attached, obturator internus muscle. Now, if I ask you, I want the answers from everyone. Which border divides the iliac fossa and the sacropelvic surface? Which which border divides the iliac fossa and the sacropelvic surface? चलिए आंसर दीजिए इसका फटाफट से. Yes, it is the medial border. Very good. It is the medial border. Very good. Obviously, you can see बेटा ये medial border ही तो है. You can see this medial border. I've already talked about this. Yes, Kriti, Harsh, Rizkhan, Ash, Kiran, very good. It is the medial border beta. It is the medial border beta. Just summarizing the ilium beta, what we have discussed in the ilium. Now, just summarizing the ilium beta, you already know the ilium, okay? It is consisting of ala and body. Body is not a part of discussion. It is forming 2/5 of acetabulum that you already know. Ala basically consists of 4 borders and 3 surface. 4 borders you already know. We have anterior, superior, also known as the iliac crest, right? The posterior border and the medial border. The posterior border and the medial border, right? And 3 surfaces you already know, the lateral surface, बाहर की तरफ जो है, या we call it the gluteal surface. Then you already know we have the iliac fossa and the sacropelvic surface. It is also composed of 3 things beta. You already know, yeah, the sacropelvic surface, we have the ischial tuberosity, sorry, iliac tuberosity. Okay, we have the auricular part and the pelvic part. Anterior border consists of anterior superior iliac spine, anterior inferior iliac spine. Superior border contains 7 muscles, okay, from anterior to posterior, that you have to learn, right? Posterior border, posterior superior iliac spine, posterior inferior iliac spine. And if we talk about the medial part, right, the middle border, so it is the border which is separating the iliac fossa and the sacropelvic surface, right? So I hope the anatomy of the ilium is clear. Beta, it's a very tough bone. I would advise everyone to know, go through the notes, the diagrams that I have drawn, right, and learn the same day. I will be discussing the ischium and the pubis tomorrow. I wanted to complete today topic, but yeah, it's a very big topic and I have tried my level best, but because I have to start everything with basics, so yes, I have to tell you about the regions, the bones, the joints. Yes, the x-rays also I'm showing you, the every picture, like all the things I'm like discussing in detail, parts, site determination done. Okay, ilium osteology is completed from my side. Yes, Umar, thank you very much. You're watching me from Egypt. I have tried my level best, beta, to explain the things to you in a very crystal clear manner. I hope you all understood, beta. I hope you all understood. चलिए, very good, Alhadita, very good. Yeah, Rizkhan, very good, beta. Yeah, I will be discussing, I will be taking kidney in that part only, beta. Pelvis and perineum में ही करवाऊंगा. Hind cut, pelvis and perineum I will be doing in that part only after lower limb. Please, अब मत पूछना. चलो. Okay, guys, goodbye. I'm like, I am also tired now.